can never take away the power of my It's out of my hands, but I'm still in control. It's out of my hands. You can never take away the power of my It's out of my hands, but I'm still in control. It's out of my hands. You can never take away the power of my It's out of my hands, but I'm still in control. It's out of my ओके फाइनली। यार इतना लैग कैसे आ रहा है कैमरे के अंदर? लैग आ रहा है ना? सुजीन वेलकम। कैमरे में लैग आ रहा है ना? अब कैमरा बंद ही हो गया। पता नहीं अचानक से कैमरे के अंदर लैग सा आया था पहले, एकदम से छोटा सा लैग आया, छुटका सा लैग। पर ठीक है, अब ठीक है, अब सही चल रहा है। आई होप सही चल रहा है। और आज मेरी स्ट्रीम हो गई बहुत ज़्यादा लेट क्योंकि मैं हो गया कमरा शिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा बिजी। उस कमरे से इस कमरे में आया मैं शिफ्ट करके, तो इस वजह से थोड़ा हो गया। हाँ, थोड़ा फ्रेम ड्रॉप हुआ, अब नहीं है, बढ़िया है ना? चलो ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एनीवेज, आज तो जी क्या कहते हैं, न्यू विलेट की स्टोरी क्वेस्ट हम करेंगे। न्यू विलेट डाल दी सीधे मैंने, गेंशिन इम्पैक्ट डालना था। उफ, बहुत डिले हो गई स्ट्रीम। आज पहली बार मैं स्ट्रीम 3 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम। सोचो। बैकग्राउंड चेंजेस लग रहा है कि पीछे डबल बेड लगा हुआ है, इसके से बैकग्राउंड चेंज लग रहा है। दिखाऊं तो मैं कितना चेंज है, ये देखो। मोड़ लेता हूँ वापस इसको अपनी तरफ। इतना सही है। भैया मेरा न्यूविलेट निकालने वाला है 75 पेटी, मैं निकाल दूं? मैं स्ट्रीम पे निकाल दूं? बोलो, कोई तो निकलवा लो यार। किसने पुल नहीं करवाया न्यूविलेट मुझसे?
अरे हमारा अबिस हो रहा था क्या? 36 स्टार हो गया अबिस, देखा गाइस? ऑल थैंक्स टू मिस्टर पॉम पॉम, मिस्टर पोलचू पॉम पॉम, ऑल थैंक्स टू हिम। गारंटीड है 50-50 होता तो अकाउंट दे देता। अरे हम ऐसे निकालेंगे ना कि हमें पता नहीं, जैसे मैं सरप्राइज हो जाऊंगा, मैं ऐसे दिखाऊंगा, ओह माय गॉड, इस तरीके से हम जनता को बेवकूफ बनाएंगे। आ जाओ। बस यार अभी है ना, लेट स्टार्ट करने की प्रॉब्लम है, इस टाइम कोई होता तो है नहीं। कौन ही देखेगा अगर इस टाइम स्ट्रीम मेरी, दोपहर के टाइम? आधे लोग पता नहीं कहाँ लगे हुए हैं। 10 पुल हो जाए फिर देता हूँ। अच्छा ठीक है चल। चलो इतने लोग आते हैं, इतने अपन अपनी डेली क्वेस्ट निपटाते हैं, डेली कमीशंस वगैरह करते हैं, ठीक है यार? ये भी सारी की सारी जो है ना, इनको खोलना पड़ेगा। इसे नेविगेट करता हूँ, यहाँ से चलते हैं। अबे हम सोचे पानी में जाएंगे, ये तो ऊपर है बे, ये तो ऊपर है। चलो यहाँ से गोता मारते हैं पानी के अंदर, इस वाले को नेविगेट करते हैं, इसको ओपन करते हैं। अबे यार यहाँ भी नहीं पहुँचा अभी तक तो मैं। अबे कितने सारे भी मुझे ओपन करने हैं। चलो यहाँ से गोता मारते हैं पानी के अंदर, ऐसे तैरते हुए जाएंगे। न्यू एरिया कैसा लगा? और फाउंटेन वर्ल्ड क्वेस्ट में भी कट सीन्स हैं। न्यू एरिया बहुत सही लगा मुझे, रियली रियली नाइस। मैं अभी यहाँ पे कुछ भी वो नहीं ले रहा, कोई हाइड्रोक्लिस नहीं, कोई कुछ नहीं, सब बाद में। जय भाई, मजा आ गया। न्यूविलेट एंड उसका वेपन मिल गया। अरे भाई मुबारक हो, मुबारकें हो जाए, मुबारकें। कितने पुल में? लवनीत भाई हेलो, वेलकम 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 एवरीवन टू द स्ट्रीम। आज स्ट्रीम बहुत लेट हो गई है क्योंकि हमने अपना रूम शिफ्ट किया है, और रूम शिफ्ट करने के चक्कर के अंदर हम बहुत लेट हो गए। अरे खुलेगा कि नहीं? खुल जा। ओहो, ये तो नीचे ही रखा हुआ है, इसको ले लूँ क्या सामने सामने से? अभी नहीं लूँगा, बाद में लूँगा, टेक इट आफ्टरवर्ड्स। सबको इनविटेशन दिया है क्या पर्सनली? किस चीज़ का इनविटेशन भाई? आने का स्ट्रीम पे? नहीं, पर्सनली इनविटेशन मैंने किसी को नहीं दिया। अरे लगता है नीचे से ही जाना पड़ेगा, यहाँ से तो ऊपर आ जाऊंगा मैं जमीन के। मैं बिल्कुल उल्टा जा रहा हूँ यार, पीछे जाना है मुझे। व्हाट द हेल, मैं बिल्कुल उल्टा जा रहा हूँ। आई हैव टू गो बैकवर्ड्स, उधर। बताओ। न्यूविलेट सरपास्ड अयातो एंड बिकेम द स्ट्रॉन्गेस्ट डीपीएस इन गेम। अल्हेतम और न्यूविलेट कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, सरपास ही कर दिया अयातो को। देखो मैं तो यही कहता हूँ, इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या कहते हैं, कैसे बिल्ड कर रहे हो। कुछ लोगों का या तो बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड होगा, न्यूविलेट से ज़्यादा डैमेज देगा, लेकिन एट अ कंपेरेबल बिल्ड, हाँ ऑब्वियसली न्यूविलेट का जो कामेहा मेहा है, इट्स डूइंग मोर डैमेज देन अयातोज ई। Lavneet God of War 03 donated लवनीत भाई 1000 थैंक यू rupees. फॉर द डोनेशन, थैंक यू थैंक यू Battle थैंक यू। Pass यार ले मेरे कान में लिया। लगा लेना चाहिए, मेरे को आवाज़ नहीं आई। लवनीत भाई HSR में बैटल पास ले लेना। HSR मेरा बैटल पास पूरा होने वाला भाई। थैंक यू सो मच फॉर द डोनेशन। लवनीत भाई ओपी इन द चैट, थैंक यू सो मच ब्रो। हम कान में नहीं लगाए थे ये ईयरफोन। सिंगल पुल में वेपन एंड 29 पुल्स में न्यूविलेट। जय भाई, ओपी किस्मत है तुम्हारी, ओपी किस्मत हम कहते हैं ना जिसे। ले लेना, ओके ब्रो।
यार अंडरग्राउंड अंडर वाटर म्यूजिक इन्होंने इतना अच्छा बनाया है, बाई गॉड की कसम। धन्यवाद लवनीत भाई। लवनीत भाई हमें कब स्पॉन्सर कर रहे हैं? जब तुम स्ट्रीम स्टार्ट करना शुरू कर दोगे। लवनीत भाई को हमारी स्ट्रीम देखते हुए 1 साल हो गया है। मैंने नवंबर में स्ट्रीम स्टार्ट की थी, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। तब से लवनीत भाई हमारे साथ हैं। वैसे 25 पे डीलूक मिला था, 29 पे मिल गया। ये तो और भी अच्छी किस्मत है। आप 50-50 हार जाओ अर्ली, और उसके बाद अर्ली आपको कैरेक्टर मिल जाए, ये तो और भी अच्छी किस्मत है ब्रो। माही वेलकम टू द स्ट्रीम। आपने कभी स्ट्रीम पर बुलाया नहीं सुजीन को? सुजीन ने कभी स्ट्रीम ही नहीं की। न्यूविलेट पर पुल कर रही थी, कचिंग मिल गई। प्रतीक भाई वेलकम यो। अरे ना ही देखो, अब यहाँ पर जय है, जय ने भी पुल किया, उसको डीलुक मिल गया, लेकिन डीलुक मिलने के 4 पुल्स के अंदर अंदर उसे न्यूविलेट भी मिल गया। तो आई होप तुम्हारी किस्मत ऐसी हो। C1 R1 न्यूविलेट आ गया, में हो गया मेरा। हे भगवान, मतलब कि कसम से लोग क्या कितने पुल के अंदर हो गया ये तो बताओ। C1 R1 मतलब कि न्यूविलेट भी 2 मिल गए और R1 भी। स्ट्रीम करूंगा, अब सोच रहा हूं कौन से टाइम में करूं। ओके, कब करने वाले हो स्ट्रीम? अरे पकड़ो ससुरे को, कहाँ जा रहा है ये? कैचअप विद द स्ट्रेंज लाइट, 2-3 बार कैच करना पड़ेगा। कॉट अप, बहुत बढ़िया। अब जरा आशिद भाई वेलकम। अरे हूताओ मिल गई अरे लवनीत भाई, Lavneet God of War 03 donated 1000 rupees. अरे लवनीत भाई क्या कर रहे हो यार? Received 1000 rupees on Google Pay. भाई क्या कर रहे हो? एक दे दिए बहुत है, कितने बैटल पास लूंगा? एक से ही काफी, एक काफी है मेरा। अरे लवनीत भाई बिल्कुल ही मतलब कि इमोशनल कर देते, इमोशनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे कौन सा बैटल पास लूंगा मैं? होपफुली, लेकिन प्रीमोस खत्म हो गया, वेल्किन लेना पड़ेगा, फिर और पुल कर दूंगी। अरे माई टेंशन ना लो, मेरे 500 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। 500 सब्सक्राइबर्स के ऊपर मैं क्या कहता है वेल्किन गिव अवे करूंगा, तब पार्टिसिपेट करना। क्यों नहीं चाहिए क्या यार, अब यार किस स्ट्रीमर को नहीं चाहिए होते? वी आर ऑल हियर टू अर्न मनी, बट आई लाइक योर जेनरोसिटी। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। इसमें 2 वेल्किन दे गिव अवे कर देना। हाँ ये भी बात सही है। सुजीन की चैट में से एक वेल्किन गिव अवे करो चलो भाई 500 सब्सक्राइबर्स से वेल्किन गिव अवे होगा, हो सकता है उस टाइम 2 वेल्किन गिव अवेज कर दूँ 500 सब्स के ऊपर। तो 500 सब्सक्राइबर तुम्हारे यार कुछ दोस्त वगैरह हों जो गेंशिन खेलते हो, HSR खेलते हो, बुलाओ उन्हें यहाँ पे, सब्सक्राइब करवाओ। सब्सक्राइब उन्हीं से करवाना जो देखते हो, समझ रहे हो मेरा पॉइंट? सब्सक्राइब उन्हीं से करवाना जो गेम देखते हो। फालतू में नंबर बढ़ाकर क्या कहते हैं यहाँ पर लोग ना आए तो कोई पॉइंट नहीं होता। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। प्रतीक मैं भी फिशल के कॉन्स ट्राई कर रहा हूँ। किसकी फिशल? C5 है। अच्छा प्रतीक की C5 है। ओके यार, आज पता है आज मेरा फास्ट है ट्यूसडे का ना, तो मैं खाली ये बनाना शेक पी रहा हूँ। घर रूम शिफ्ट करते करते ना, रूम उधर से इधर शिफ्ट किया ना, मैंने अपने सारा सेटअप शिफ्ट किया है, करते करते मेरी हालत खराब हो गई। मैंने कहा अब खाना खाऊंगा, फिर अचानक से याद आया आज मेरा ट्यूसडे का फास्ट है। जय बजरंगबली। गाइस लाइक दबा देना जिसने अब तक लाइक नहीं किया हो तो प्लीज। ठीक है, इसको मारना है। डिस्ट्रॉय ऑल द पफर फ्रूट। अरे ओ ऐसा क्या? रोजी हो गई।
मैंने 1000 की चैट की थी और आपको चाहिए भी नहीं था, अब गिव अवे करो चलो। नहीं भाई, चाहिए यार। तुम एक बताओ, हिंदुस्तानी सभ्यता पता क्या कहती है, इंडियन सभ्यता कहती है, वो किसी घर जाते हो और आपके घर में कोई आपको क्या कहते हैं, घर वाले माँ दादा दादी कोई आपको 400-500 रुपये पकड़ाते हैं, तो आप थोड़ी कहते हो हाँ लाओ दो मेरे को दो। आप क्या कहते हो? अरे थैंक यू, अरे नहीं इसकी क्या ज़रूरत थी, अरे थैंक यू सो मच। फिर उसके बाद वो इंसिस्ट करते हैं, फिर उसके बाद आप करते हो। ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारी संस्कृति है। और कहाँ रह गई है क्वेस्ट? 3 कर ली क्या मैंने? सिड ने 50-50 जिता दिया। ओ अरे भाई मुबारक हो, अब सिड की किस्मत अच्छी है, उसके पुल्स अच्छे जाते हैं। हम भी सोच रहे हैं कभी कुछ पुल कराना, सिड से पुल कराएंगे, है ना? जो फैक्ट्स है ना। बस पैसे हमें 5 मिनट के लिए मिलते हैं, उसके बाद तो मम्मी रख लेती है, हमें क्या। हाँ वो तो है, लेकिन मम्मी भी तो ऐसे बोलती है ना, अरे नहीं मतलब ये कितना, एक लिफाफे के पीछे कितना आगे पीछे होता है। अरे नहीं चाहिए, अरे रख लो, अरे नहीं बच्चों के लिए, अरे बच्चों को मिठाई खिला देना। नहीं मैं तो सीधा ले लेता हूँ, कोई पैसे देते था तो। आज तो भाई टाइम वेस्ट नहीं करते बिल्कुल भी। गुड, क्या टाइम वेस्ट करना, सही बात। और फुरीना एंड C2 राइडन करूं या C3 राइडन करूं? यार प्रतीक एक बात बताओ, तुम्हारा C1 R1 न्यूविलेट पुल करने के बाद भी पुल्स बचे हुए हैं कि तुम C2 राइडन कर सको या C3 राइडन कर सको? क्या बात है। पहले ऑ करो फिर लाइक करूंगा। ऑ करो, लाइक करो। एनीवेज, किधर जाने का है? फाइंड ऑल द हाइडिंग किड्स। इधर छुपे लाए रे, ये डब्बे डुब्बे के पीछे रुके खड़े होंगे। ये रही एक तो। वेल मोमेंट्स ब्रो, आई गॉट न्यूविलेट। अब पूरा फोकस नाहिद और अलहेतम पे है। न्यूविलेट के बाद उन दोनों को आपसे पुल करवाऊंगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल करवाना। कहाँ छुपे बच्चे एक पूरा? हाँ आगे पेड़ कूड़ के पीछे छुपा होगा कोई। अरे इधर था कुछ तो। कॉमन चेस्ट यार, कहाँ है बच्चा? मेरे पास अब 4 लिमिटेड कैरेक्टर्स के कॉन्स्टलेशंस हैं। अरे बंदा तो यहाँ खुले में छुपा हुआ है। कर दो गिव अवे अगर आपको पैसे नहीं चाहिए आर्कन भाई। अरे भाई हमने कब बोला हमको नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी ओवरवेल्म हो जाते हैं ना, एकदम से इतने दे दे। मैं गिव अवे करूंगा, गिव अवे मेरा 500 सब्स के ऊपर होगा, वो तो बता चुका हूँ। 500 सब्स के ऊपर गिव अवे पक्का है, वो तो मैंने टाइटल में भी डाला हुआ है। अभी तो मैंने ये भी नहीं सोचा ना गिव अवे करूँ किस, कुछ स्पेशल करके गिव अवे करेंगे। अभी एकदम से कैसे मैं कर दूँ? 500 पे गिव अवे, हाँ होने वाले हैं। 45 सब्स रह गए मेरे पास, 500 हो जाएंगे बड़ी जल्दी। आज तो लगा पुल्स ही नहीं है। 6 पुल्स फाउंटेन ऑफ ल्यूसीन, सुमेरू ट्री और इनेज्मो ट्री ने निकाल दिए और 5 पुल्स भी मिलेंगे, तो 3 गिव अवे होंगे। 3 गिव अवे क्यों होंगे? गिव अवे तो एक ही होगा। स्विफ्ट स्लेयर, Quietly now. Nice and spicy. Everybody stand back. Game's up. Fun's over.
2 मेरी तरफ होंगे जो 1K चाहिए। अच्छा ओके, ए सीन एडिट भाई। 71 पुल्स मारे अब तक मैं नहीं, शिंगचू नहीं मिला और कोई ना ही कोई 5 स्टार। भाई तुम्हारी किस्मत कुछ ज़्यादा ही बुरी चल रही है। विवेक भाई हैप्पी बर्थडे आर्कन ऑफ सिलीगोड। हैप्पी बर्थडे विवेक भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू एज वेल। पार्टी कब दे रहे हो? समोसा वमोसा की पार्टी कब दे रहे हो? देखो आर्कन भाई कहीं इधर उधर लेकर अपे को जिता देना। किसको? अच्छा तुम्हें जिता दूँ? ओहो यार, मैच फिक्सिंग करनी है तो साइलेंटली करो ना। तुम क्या सबके सामने मैच फिक्सिंग कर रहे हो? सबके सामने गिव अवे फिक्सिंग कर रहे हो, गलत बात, ऐसे नहीं करते। चलो डेली रिवॉर्ड्स लेते हैं, कमीशन रिवॉर्ड, और उसके बाद न्यूविलेट की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। इतने दिनों बाद फाइनली जैसे रेशियो सोचा था वैसा एम्बिबिटर बिल्ड हुआ। कैसा बिल्ड हो गया? क्या रेशियो आ गया तुम्हारे एम्बिबिटर का? क्योंकि मेरा तो अभी बहुत बकवास है। बकवास नहीं मतलब ठीक है, मेरा जितना मेरा एम्बिबिटर लूने का वो है ना रेशियो है, उसके हिसाब से बहुत बढ़िया डैमेज दे रहा है। मुझे तो फिशल चाहिए। मेरा शिंगचो C4 हो गया, फिशल चाहिए। Thank you for कैथरीन लुक स्ट्रेस्ड। Astra. कैथरीन स्ट्रेस क्यों लग रही है? I know 74 154 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरा इस टाइम 61 90 के ऊपर है। ये मेरा रेशियो है, जो कि मुझे लग रहा है कि अभी बहुत इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। मैं फार्म कर रहा हूँ, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। टॉक टू डार्सी, यू अराइव इन द फोर्ट्रेस मेरपीट। ये भी फिनिश नहीं हुई क्या? अच्छा वर्ल्ड क्वेस्ट है। ओह क्लेम अनलॉक क्लेम। ओके मैं चलता, प्रीमोस फार्म कर रहे हैं। अरे न्यूविलेट की स्टोरी क्वेस्ट नहीं देखोगे? It's been a while since we last saw Neuvilette. Paimon wonders what he's been up to. ओके Paimon has so many questions about his true identity. Let's go talk to him and find out. पहले हम कैथरीन से बात Add करेंगे। Astra. ये कैथरीन स्ट्रेस्ड लग रही है। व्हाई डज कैथरीन लुक सो स्ट्रेस्ड आउट? प्रो प्लेयर आर्कॉन। मैंने कर ली स्टोरी बिना स्किप किए। ओके चलो ठीक है भाई, फिर जाओ प्रीमोस वगैरह फार्म करो। सिग्नेचर एलसी नहीं है स्टिल। 70 150 हो गया, सही है भाई, सही, बहुत सही चला गया। बिना सिग्नेचर एलसी के इतना जा रहा है ना, तुम्हारा डैमेज बहुत मस्त देगा। 45 मिनट्स की है न्यूविलेट की स्टोरी क्वेस्ट। आशिदो ये 45 मिनट्स कहना बंद करो। जो लास्ट टाइम चूना लगाया गया ना मेरे को, गंदे वाला, 4.5 घंटे की स्ट्रीम करवा दी मुझे। 45 मिनट क्या के। पॉनी क्यूमी हाय हेलो, वेलकम टू द स्ट्रीम, वेलकम टू द स्ट्रीम, वेलकम टू द चैनल। आई थिंक यू आर न्यू हेयर। भाई C6 फिशल हुए मेरा हुआ को रन कर सकता हूँ हुताऊ के साथ। फिशल को हुताऊ के साथ रन तो कर सकते हो, लेकिन पता है क्या, इलेक्ट्रो और पायरो का जो कॉम्बिनेशन है ना, इट इज़ नॉट रियली दैट वेल छोटे छोटे मॉब्स के लिए, क्योंकि उड़ उड़ के जाते हैं लोग इधर उधर ओवरलोड के ऊपर। तो तुमको क्या कहते हैं वो चाहिए, क्या कहते हैं, अगर सिंगल टारगेट डैमेज के लिए ले रहे हो तो सही है, फिर तो कर सकते हो। कैमरा देखिए उधर आपके साथ प्रैंक हो गया। मेरे साथ क्या प्रैंक हुआ? कैमरा देखिए। ओह अच्छा व्हाट्स द गिव अवे? इट्स आइदर वेलकिन मून और एक्सप्रेस पास होंकाई स्टार रेल का, दोनों में से जो भी किसी को चाहिए हो। लेकिन 500 सब्स के ऊपर है। ओम भाई वेलकम, व्हाट्सअप व्हाट्सअप, वेलकम टू द स्ट्रीम। न्यूविलेट की स्टोरी को स्टार्ट करने वाला हूँ। ये तो बस ऐसे ही चल रहा है थोड़ा सा पीछे। जिंगलियो का भी आर्टिफैक्ट्स पड़ा हुआ है। होप कि 50-50 जीत जाऊं। ओके
जिंगलू का आर्टिफैक्ट पड़ा है। तो हमको तुमको जिंगलू भी चाहिए, जिंगलू चाहिए। चलो न्यूविलेट की स्टोरी क्वेस्ट पे चलते हैं सीधा। स्क्रू एवरीथिंग एल्स, यही है ना स्टोरी क्वेस्ट। अ फेमिलियर थ्रेट, पाइमोन इज क्यूरियस अबाउट न्यूविलेट, गो एंड टॉक टू हिम। ओके आई विल। अरे हम तो पास में ही हैं। गाइस लाइक दबा देना अगर किसी ने लाइक नहीं किया अब तक तो। थैंक यू वेरी मच। ना मिला तो टोपाज तो आए ही जाएगी, आ ही जाएगी, जाएगा नहीं जाएगी। टोपाज लड़की है बाय द वे। मतलब मुझे अब तक कोई भी कैरेक्टर ऐसा नजर नहीं आया गेम के अंदर जिसको निकालने का मेरा मन करे कि यार मन कर रहा है कैरेक्टर निकालना है। अरे वर्ल्ड क्वेस्ट, ये वर्ल्ड क्वेस्ट मुझे मैप में दिख ही नहीं रही है। किसी को दिख रही है? मैं भूल ना जाऊँ, वर्ल्ड क्वेस्ट को ले लेता हूँ एक बार जरा। ये वर्ल्ड क्वेस्ट में इतने डायलॉग क्यों होते हैं? अरे भाई क्यों नहीं होंगे, वर्ल्ड क्वेस्ट है, क्वेस्ट है, इट्स अ क्वेस्ट। ना मिले तो टोपाज है अभी भाई। बहुत ट्राई हार्ड करने के बाद फ्लोर 11 चेंबर 3 हुआ मेरे, पर 2 स्टार ही मिले चेंबर पर। हर चेंबर आई डेंट गेट 50 प्रीमोस। कोई तुम्हें अपने कैरेक्टर्स फिर थोड़ी और स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे ना। आई एम फ्रॉम अल्जीरिया बाय द वे। ओह वेरी नाइस वेरी नाइस। तो यार माई होल स्ट्रीम इज इन हिंदी। आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आई एम अ हिंदी स्ट्रीमर फ्रॉम इंडिया। आई स्ट्रीम इन हिंदी। आज जाके आपके डीसी ज्वाइन कर पाई, 2 दिन से ट्राई कर रही थी। अरे 2 दिन से ट्राई मार रही थी डीसी ज्वाइन करने का, ऐसे कैसे हो सकता है? हो क्यों नहीं रहा था, क्या दिक्कत है? रुकिए हम आपको भी वेलकम करते हैं। यस यू आर हियर, वी हैव टू से हाय, हेलो, वेलकम वेलकम। सीली रीरन हो रही है ना शायद से, सीला निकाल रहे हो? नहीं भाई जरूरत ही नहीं है। आई रियलाइज कि मेरा जीला ना निकालने का जो डिसीजन था वो बहुत सही था। मैंने अच्छा गैसीला ना निकाल के, क्योंकि आज ही मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा था। मुझे ना हंट कैरेक्टर से ना थोड़ा सा अब वो होता जा रहा है अलग। आई लाइक इंडियन पीपल सो काइंड। अरे थैंक यू सो मच। लाइक देर आर गुड एंड बैड पीपल एवरीवेयर। हाँ पता नहीं डिस्कॉर्ड का ग्लिच चल रहा था इसलिए। ओ हाँ आई नो डिस्कॉर्ड का ग्लिच चल रहा था कुछ 2 दिन से, कुछ लोगों का डिस्कॉर्ड ही नहीं खुल रहा था। बट दैट्स ओके, नाउ यू वेलकम इन द डिस्कॉर्ड। मुझे अपने डिस्कॉर्ड को भी थोड़ा सा रिवैम्प करना है, रोल्स वगैरह ये सारी चीज़ें ना भी मैं करूँगा बैठ के। मेरे पे E1 ज़ीला है, इन बिबिटर आने के बाद बेंच कर दिया। वही मैं कह रहा हूँ, इस गेम के अंदर होंकाई स्टार रेल में स्पेशली डिस्ट्रक्शन कैरेक्टर्स एंड एरुडिशन कैरेक्टर्स दे आर बिकमिंग सो स्ट्रॉन्ग कि हंट कैरेक्टर्स को कोई पूछ नहीं रहा। इनको बहुत ही ओवर पावर्ड हंट कैरेक्टर निकालना पड़ेगा, नहीं तो मजाक से हटके। वरना इम्बिबिटर लूने क्या डैमेज करता है, 3 बंदे ले आता है एक साथ में। जिंगयुआन का फॉलो अप अटैक इतना स्ट्रॉन्ग है, ब्लेड इतना स्ट्रॉन्ग है। मैं जल्दी से क्वेस्ट लेके, ये क्वेस्ट करूंगा नहीं, न्यूविलेट की स्टोरी को स्टार्ट करूंगा। जिस क्वेस्ट में पिक कर रहा हूँ, कोई भी नया कैरेक्टर आएगा धीरे धीरे पुराने कैरेक्टर बेंच्ड होते जाएंगे। ये तो है, पर मेरा जिंगयुआन अब तक चल रहा है। 4 महीने से मैं अपना जिंगयुआन प्ले कर रहा हूँ। मुझे अब तक कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं लगा। इम्बिबिटर लूने आया, इम्बिबिटर लूने को लेकर मैंने सेकंड टीम बना दी, तो मेरे पास 2 टीम्स होगी मेमोरी ऑफ केओस के लिए। पर मुझे अब तक जिंगयुआन को बेंच करने का रीजन नहीं मिला। मेरे दोस्त के पास 2 इम्बिबिटर क्या डैमेज देता है, E2 इम्बिबिटर। हाँ वही तो। चलो न्यू ये ले लिया मैंने। अब हम करेंगे न्यूविलेट की स्टोरी क्वेस्ट।
Monsieur Neuvilette, आपके पास मेलुजीन क्यों खड़ी है? वैसे Monsieur Neuvilette is very fond of melusines. Wait, did I hear that right? Monsieur Neuvilette, are you sure you'd like to take over the case yourself? That's right. No, but why? Technically speaking, cases like this are better left to the guards. Neuvilette, Sabine, hey there! What are you two talking about? Traveler in Paimon, please help me talk our Chief Justice out of this. He wants to investigate a case on his own. Okay. Now, this is completely unprecedented. How can we have the Udex acting like a private detective? Hmm? Thank you for your concern, but I currently have no such plans. Oh, apologies. I took your question in earnest, but it now occurs to me that it was most likely in jest. मेरे पास हर टाइप का गेम प्ले स्टाइल का ऑप्शन है, जीला, जिंगयुआन, काफका, एम्बिबिटर, सारे अलग अलग पाथ के। ये तो है, एक वैरायटी होनी चाहिए, लेकिन मेरा इशू ना स्टार्टिंग से वही रहता है कि इतने सारे को बिल्ड करना ना, इफेक्टिवली बिल्ड करना मुश्किल हो जाता है। अब ये इस अजीब प्राणी को पानी में फेंक देगा। कौन इस अजीब प्राणी को? So, what is it exactly? It sure sounds serious if it's something you've got to investigate personally. A Melusine named Kiara received a threat letter. ओह, कियारा। मैंने पढ़ा किरारा। किरारा मेलुजीन कब से बन गई? And then? That is all the information I have acquired at this stage. Huh? I have no idea why you're so hung up over this. I've checked the schedule in advance and it seems like there aren't any trials today. So, if you insist, I have no objections. तो इस मेलुजीन के पंख है पीछे। इसके पंख निकले हुए हैं। Thank you for understanding. I will leave a note explaining my absence on my desk. I would appreciate it if you could take it to Lady Farina. She may have no interest in official affairs, but standard procedure dictates that I'm still responsible for reporting to her. सिडीन नाम की प्राणी। अच्छा, नहीं भाई, मेन गार्ड है ये कौन सा एक्ट है? ये कोई सा एक्ट नहीं है, ये न्यूविलेट की स्टोरी क्वेस्ट है। वेलकम पैराबॉय। जीला तो अभी तक जैसा सोचा था वैसा बिल्ड नहीं हुआ। 5160 है, 70% टू क्रिट चाहिए ही था। वही तो कह रहा हूँ, नहीं हो पाती, इतने सारे कैरेक्टर्स नहीं बिल्ड हो पाते हैं। मुझे एक कैरेक्टर बिल्ड करने में भारी पड़ रहा है इतना। कूदती हुई जाएगी, ये गई कूदती हुई। Judging from Sadine's reaction, it must be pretty rare for you to investigate stuff personally. What's so special about this case? I cannot tell you just yet, but it reminded me of certain past events. ये नाटक है, एक्ट नहीं। नाटक एंड तमाशा। लाइव विनर्स, हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। भाइयों, जिन्होंने लाइक नहीं दबाया, लाइक दबा दो। There could be complicated conflicts of interest behind all this, so I must eliminate all risks in advance. Come on, stop being so secretive. We still have no idea what's going on. It is not my intention to keep you in the dark, but I need some time to revisit those memories and collect my thoughts. Okay. Long story short, a little more than 400 years ago, I became the Udex of Fontaine and 400 initiated a years ago. series of institutional reforms. 400 साल हो गए इसको, क्या बात है। There were few people I could trust, but I had two subordinates who were exceptionally trustworthy and capable. Carol, a Melusine, and Vautrin, leader of the Special Security and Surveillance Patrol. They must have been amazing people to receive such high praise from you. Indeed. Unfortunately, I wasn't able to protect them. The reforms damaged the interests of some, and the more conservative faction took advantage of Carol's identity to instigate political unrest. Ultimately, they wanted me to yield more of my power. Okay, स्टोरी गेम्स खेल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। RDR2 ऑलमोस्ट खत्म है। डेविल में क्राई 5 चालू किया। अरे साइरस, तुमको कुछ स्टोरी गेम्स का अगर वो चाहिए हो ना, सजेशन, या मुझे कुछ देना चाहो तो मुझे डिस्कॉर्ड पे डीएम कर सकते हो। The incident resulted in Carol taking her own life and Vautrin being exiled. From then on, I've been especially careful when dealing with cases related to Melusines. All Melusines used to अरे live a हम तब secluded से life स्ट्रीम away पर हैं from जब स्ट्रीम human स्टार्ट हुई, society. बस अभी मैसेज करने का मौका मिला। अच्छा चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। I granted their wishes when some of them, including Carol, asked me to bring them to the court of Fontaine. अटेंडेंस लगा देनी चाहिए, अटेंडेंस लगा दिया करो। Many common folk believe that I share a special bond with the Melusines, and whatever they do can be traced back to me. Some of them, especially those who hold a grudge against me, exploit that belief and stir up conflict over Melusines in an attempt to lay the blame on me. I have nothing against the opinions of others,
But the moment a whirlpool of conspiracy forms, it inevitably affects the innocent. It has already happened once, and I want to make sure it does not happen again. Okay. Even so, why do you have to be the one investigating? RDR2 खेल लो, next level है. I plan to. मैंने अब तक खेली नहीं है. मैं RDR2 खेलूंगा. There's the guards, the Marishose Phantom, and the Special Security and Surveillance Patrol. Aren't they more than enough to figure out what's going on? इनफैक्ट मेरा जो आर्कॉन AAA का चैनल है, मैं उस पर क्या कहते हैं AAA गेम्स ही खेलूंगा. अब तक मैंने स्टार्ट नहीं किया खेलनी वहाँ पे, तो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे अभी मेरी लगा लो डेड स्पेस बाकी रह गई है थोड़ी सी. अब मेरा यार वो वाली गेम कौन सी है, गॉड ऑफ वॉर मेरी रह गई है. तो बहुत सारी गेम्स यार खेलने के लिए. Based on prior experience, there is a high chance that those who hold hostility towards me do not belong to the same department. The political system of Fontaine is relatively complex and involves the interests of multiple different factions. However, since I am technically an outsider in Fontaine, a lot of trouble could be avoided if I personally took on the case. आउटसाइडर? तुम कहाँ के आउटसाइडर हो भाई? बस स्पॉइलर मत देखना, वाईटी पे स्पॉइलर बहुत देते हैं. ना स्पॉइलर क्यों देखूंगा मैं? Outsider? वही, दैट्स एग्जैक्टली आउटसाइडर. तुम कहाँ से आउटसाइडर होगे भाई? But aren't you the Chief Justice of Fontaine? Why would you be an outsider? मेन कैरेक्टर ऑफ माई लाइफ, ये होता टाइटल नाम का. हेलो, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू द स्ट्रीम. हाउ आर यू? I understand where you are coming from, but there is not necessarily a connection between my responsibilities and how I perceive myself. ओके. You know very well about my true identity, and have even met others of my kind in other nations. Even though I was born with a human form, there is a fundamental difference between dragons and humans. Taking on the role of Chief Justice does not make me a part of this community. In fact, the status I was granted has prevented me from forming deeper bonds with others. I have lived in Fontaine for a long time, but I do not belong here. That is why I call myself an outsider, a fish out of water. Yeah, we have nothing to do with all those organizations anyway. So how about we come with you on your investigation? गॉड ऑफ वॉर खेला था, अच्छा लगा. रैग्नारॉक बाकी है खेलना, बट नो PS5. वही तो मैंने गॉड ऑफ वॉर मेरे बीच में छूट गया क्योंकि मेरा पीसी वगैरह का सीन बन गया था, फिर मैं खेल नहीं पाया उसको. दोबारा खेलूंगा. आपके हिसाब से 4.2 का आर्कन क्वेस्ट कैसा होगा भाई? अब तक तो बहुत सही लग रहा है. आई थिंक फिनाले भी बहुत ज़बरदस्त होगा. सो फार फॉन्टेन की आर्कन क्वेस्ट ने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया है, बिल्कुल भी. बहुत मस्त लग रही है, बहुत मज़ा आ रहा है. लाइक ऑटर साइडर. आशिदो, ये न्यूविलेट आउटसाइडर नहीं है, ही इज एन ऑटर साइडर. Let's team up and round up all the bad guys lurking in the dark. That does not sound like a bad idea. I rarely investigate cases on my own, but with professionals like you around, I'm sure it will go a lot smoother. Oh, Paimon's starting to get a little embarrassed. Just leave it to us. I will write my note of absence right away. Let us depart together once I'm done. Let us go. We should visit Kiara first and try to gain a better understanding of the situation. ओके, लेट्स गो. गाइस लाइक दबा देना किसने नहीं किया अब तक तो. प्रोफेशनल. So Neuvilette feels like he doesn't truly belong here in Fontaine, but एक बात that और really है. true? कौन सी बात? Paimon feels like he has a kind of skewed perspective on a lot of things. Anyway, let's catch up with him first. RDR2, विचर 3 ये दो जरूर खेलना स्टोरी गेम में. विचर 3 शायद लाइव नहीं खेल पाओगे, थोड़ा R-rated है. Paimon's been thinking. You called yourself a fish out of water, right? But since you're the Hydro Dragon, would a dragon out of water suit you better? पाइमॉन बहुत गंदा जोक था ये. Thank you for your suggestion. I will consider using the more accurate term in private occasions. Please allow me to rephrase. Has a dragon out of water? Ugh. That sounds kind of weird. Let's stick with the previous version instead. अब जो डेनस्लिफ का क्वेस्ट आएगा उसमें क्या रिवील होगा? आई हैव नो आइडिया. डेनस्लिफ की क्वेस्ट का तो हमेशा, इंटरल्यूड क्वेस्ट का तो हमेशा वेट रहता है. बाय द वे, जहाँ तक साइरस तुम उसकी बात कर रहे थे ना, इसकी क्या कहते हैं, R-rated की, तो यूजुअली मैं रात के टाइम ही खेलता हूँ और वो मेरा चैनल दूसरा है, ठीक है. तो वहाँ पर मतलब कि गेम खेलूंगा तो आई विल लेट पीपल नो कि दिस इज एन R-rated गेम ऑब्वियसली. HSR वैन. लवनीत भाई, अभी तो क्या कहते हैं हम खेल रहे हैं न्यूविलेट की स्टोरी क्वेस्ट.
उसके बाद हम करेंगे. I never thought I'd see him here. Does anyone have a camera? मेरी फोटो खींचने के लिए. ओ अच्छा, उसकी बात हो रही है, क्या कहते हैं, न्यूविलेट की. We should have gone up to him and said something. Yeah, that was the perfect opportunity. अभी भी न्यूविलेट की बात कर रही हैं. स्टोरी गेम्स में कब लाइव करते हो यार? स्टोरी गेम्स के अंदर ना, मतलब चैनल दूसरा बनाया, मैं करना स्टार्ट करूंगा, अभी स्टार्ट किया नहीं है. आई विल स्टार्ट. तो भी एक अनुमान से यार, कुछ नहीं कह सकते डेनस्लीव क्वेस्ट में क्या होगा. आई हैव नो आइडिया. कैरिबियर जो क्वेस्ट थी डेनस्लीव वाली, वो बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू थी, कोई गेस नहीं मार सकता था. सारे चैनल्स को कर दिया सब्सक्राइब. अरे थैंक यू. ओहो, न्यूविलेट के फैंस. The weather's amazing today. Kiara, Monsieur Neuvilette! And you are? Oh, I remember. You're the Traveler and Paimon. I've heard about you. Aw, she's adorable! Hey there, it's nice to meet you. Thanks for the compliment. Is there anything I can do for you? I heard from Sidine that you received a threatening letter. A threatening letter? Oh, right! I remember now. The letter fell through the crack in my door as I was heading out this morning. It said something about catching me, so I thought someone wanted to play hide and seek. कितनी इनोसेंट है यार. But Sidine told me it was a threatening letter, and that I could be in danger. But that's not gonna happen with everyone looking after me, right? Yes, I will die for you. कुछ होने नहीं दूंगा तुझे मैं. Have you run into any suspicious-looking people recently? Suspicious-looking people? What counts as suspicious? Did you think of something? Nope. I don't remember meeting anyone like that. Do you still have the letter with you? Let's see. Found it. पढ़ते हैं चलो लेटर. Now then, get lost. If you don't leave the Maréchaussée Phantom, I will come and catch you in person. Don't say I didn't warn you. नया चैनल है, पहले कोई छोटा और एवरेज गेम से चालू करना. RDR2 अभी खेल लोगे, बाकी गेम्स बहुत एवरेज लगेंगे. फिर देखता हूँ मैं उस नए चैनल के अंदर ना स्टार्ट करूँगा ऐसी गेम से जिनका गेम प्ले बहुत लंबा ना हो, जो मतलब कि 8 या 10 सेटिंग, यानी कि 2-3 सेटिंग के अंदर खत्म हो जाए, जैसे कि लारा क्रॉफ्ट, टॉम रेडर, अनचार्टर्ड, इस तरह की गेम्स. जो बहुत लंबी गेम्स है ना, जिनका गेम प्ले 20-20, 30-30 घंटे का है, वो बाद में करूँगा. A simple threat. Neither the handwriting nor the content itself reveals anything about the writer's intentions. We can't rule out that possibility. Since you can't think of anyone suspicious, I will be heading back to the Palais Mermonia to review some official documents. Kiara, you should come with us. It's safer if you stay close by. Sure. Wait, no. I still have a case to work on. I promised Alof that I'd check on her place later. But you are being watched right now. Going off on your own could be dangerous. यार न्यूविलेट जो है मेलुजिन्स का कितना ख्याल रखता है. And that's where we come in to help. We'll stay with Kiara and make sure she's safe. With us around, anyone scheming to hurt Kiara can forget about it. 100%. Thank you, Traveler. Big Sis Paimon. बिग सिस पाइमॉन, बड़ी बहन, क्या बात है. Don't worry, your Big Sis Paimon is super strong. All right. Let us She go is our the separate ways for now. unknown god. Please take care of Kiara. We'll take you to a lost place right away. See you around. Resident Evil 4 रीमेक कर लेना, तुम्हें मज़ा भी आएगा और उसको देखने में व्यूअर्स को भी मज़ा आता है. अच्छा चलो RE4 खेलेंगे फिर. पहले खाना खाते स्ट्रीम देख रहा हूँ, चैट नहीं कर पाऊंगा. ओके ओम भाई, नो प्रॉब्लम एट ऑल. गाइस लाइक कर देना. So, Kiara, how old are you? Let me think. 1, 2, 10? I can't remember. But I remember coming to the court of Fontaine with Carol and Neuvilette. That must have been a long time ago. Carol? Did Neuvilette mention her just now? That was more than 400 years ago. Why would Paimon be a big sister to you? My memory isn't that good.
But Carol told me I could address others based on how I feel about them. Paimon feels a lot more grown up than me, so you're a big sis. Huh, Paimon sees. Hey, Traveler, did you hear that? Depressed. Do you know Neuv can stop rain if it's raining and when his rain idle animation is used? I didn't know. मेरे पास Neuvilette है भी नहीं तो मैं चेक नहीं कर सकता. Sorry. Melee scenes are really adorable. For the first time I didn't skip any dialogue on a world quest involved in Merusi village. यार मुझे बड़े क्यूट लग रहे हैं. क्लासिक गेम बचपन में खेलता था सब रे. अच्छा. अरे बहुत धीरे धीरे चल रही है वे. कोई तो छुप के देख रहा है. Paimon felt like someone was following us. Olaf! Kiara, you're here. Huh? Wait, aren't these two? आरी मतलब Resident Evil, yes. Oh, they're the Traveler and Big Sis Paimon. I thought so. What brings you here? Did you run into any trouble? It's not really trouble anymore with us around. What's your opinion on Furina? My opinion on Furina, I think अभी बहुत सारी चीजें रिवील होने वाली हैं and it's too early to form an opinion. May I begin inspecting the store as planned? Of course. Go ahead. कैसे देख रही है? No hazards detected. You've cleared the inspection. Seems like the criminal from that case last month never set foot in here at all. That was quick. What were you inspecting? I took a look around the shop. Neuvilette says that us Melazines have special eyes that can see things people can't. Neuvilette says तुम्हें नहीं पता, आंखें तो तुम्हारी हैं. Things like bloodstains. No matter how hard you try to clean them up, we Melazines can see their residual stains for some time. Pretty cool, huh? All right. Now that you're done inspecting, can we have a chat? Hear me out. I'm planning to release an outfit for children next month and wanted to hire you as my model. Is that okay with you? What? Of course. Is there anything I need to do? Nope. बस आई कपड़े पहनने. Please wait a moment while I take your measurements. The sample should be a perfect fit. Seems like they get along really well. Huh? What are you looking at? Is there really someone watching us? Shh! Let's sneak over and take a look. पकड़ो ससुरे को, कौन घूम रहा है पीछे हमारे? Oh! Strange. Why isn't he back yet? Charlotte. Gotcha! Charlotte, what are you doing here? Oh, wait, don't tell Paimon you're the one who sent Kiara that threatening letter. But you don't seem like the type to... Threat letter? What threat letter? This is starting to feel like an interrogation. Okay, I'll be straight with you. I don't know the slightest thing about that threat letter you mentioned. I only wanted to follow Monsieur Neuvilette and request an interview with him. मेरा हिजो देख लो भाई, क्वेस्ट के बाद देखता हूँ. इसने ही सडीन प्राणी को पानी से बचाया था. किसने? You want to interview him? That's right. I'm not the only one, you know. Interviewing him is every journalist's dream. But it's not an easy task to accomplish. The Palais Mermonia rarely accepts appointment requests from us, and we never have the chance to interrupt when the court's in session. और हम दौड़ते दौड़ते घुस जाते हैं उसके ऑफिस में. So imagine how surprised I was seeing him out on the streets today. It seemed like you were investigating something too. The perfect opportunity to whip up an exclusive, don't you think? Of course, I'll make sure to turn in my manuscript to him for review. I have my principles, and I'd never publish an article without the consent of all parties involved. Yeah, we're doing a secret investigation that can't be made public knowledge. Sid Allen, namaskar. Welcome to the I stream. see. क्या हालचाल? Well, if you say so, I guess I'll put this matter aside for now. What a shame. Chances like this don't come by very often, you know.
In exchange, could you tell me what the threat letter is about? I swear I won't tell. All right then. What? Someone's targeting a cute little Melazine? Shh, not so loud. It just so happens that I did an interview with Kiara. Last month, in fact. It was well received by our readers, so I was planning to continue the series. And now someone's coming after her? Kiara is so cute. Yes, she is. Shall I seek personal benefit at the expense of my brother? May I die by the blade? आए आए ये क्या बोले विवेक? आए यार, मुझे अपना कैमरा थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा और ज़्यादा. Yep, I guess this is nice. Yeah. I got Ashido, Hutao and Om Zhongli 8th Arkhon of luck. कोई नहीं बेटा, तुमसे अपनी राइड इन C2 करवाऊंगा. ठीक है, फिर देखते हैं लक. तुम्हारी स्ट्रीम पर राइड इन C2 होगी, ठीक है? I'll ask my colleagues about it. Who knows? We might find something. And don't worry, I know what I'm doing. This secret's safe with me. But I gotta warn you, even if I keep my lips sealed, others will know eventually. Why? People care a great deal about Monsieur Neuvilette's each and every move. Some may have already realized that something was up. Besides, the case involves Melazines, so... You will do it on early pity. मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरे पास इस टाइम कितनी विशेष सेव हैं. If you can do it on early pity ना, और मैं 50-50 पे हूँ, guaranteed नहीं है मेरी, ध्यान रखना. Anyway, I'll get going now. Watch yourselves, all right? देखो, मैं तुम्हें अभी अपने वो पुल्स दिखाता हूँ. मेरे पास कितने पुल्स हैं. Okay, I'll show you my pulls. Okay. तो मेरे पास 102 इंटरट्वाइंड फेट्स यहाँ पर है. ठीक है, 102 इंटरट्वाइंड फेट्स यहाँ पर है एंड 17 यहाँ पर है. तो मेरे पास 119 विशेस हैं. अब तुम्हें क्या लगता है कितने में मुझे राइड एंड C2 हो जाएगी मेरी? बताओ. 17 यहाँ पर और 100 तो यहाँ पे. 119 पुल्स है मेरे पास. और राइडन का बैनर आते आते 200 पुल्स हो जाएंगे. Should I ever fall to come to the aid of my brother? May I die by the blade? आए. अरे विवेक भाई, इसका मतलब क्या है तो बताओ. 3 बार बोली तुमने बात ये. ओ, क्लोरीन भी आ गई यहाँ पे. What do you क्लोरैन. think? The design looks pretty good, huh? I think it's great. इट्स सो इजी. चलो ठीक है, फिर करना. मुझे पता है कि राइडन मेरी C1 C2 आराम से हो जाएगी, लेकिन अगर जल्दी होगी ना, कोई ऐसे पुल गए कि 20-30 पुल्स के अंदर ही दोनों निकल गए, उसके बाद मुझे एनगल्फिंग पुल करना है. Huh. It's very pretty indeed. क्लोरीन मॉमी आ गई. Haran, what are you doing here? It seems that you just showed up out of nowhere. As I passed by the Palais Mermonia, I heard that Neuvilette was investigating a case with you. Technically speaking, he and I are under an employer-employee relationship. It didn't feel right to have my employer personally take on such trivial cases. 3 Raiden, 1 Ayato, 1 Mona and Raiden weapon would also like to know your location. 119 pulls. मतलब? In exactly 119 pulls, I got 3 Raiden, 1 Ayato, 1 Mona and Raiden weapon. अब भाई यही वाला लक जो है मेरे पे दिखा देना तुम. बस काम हो गया मेरा. मुझे दे दो फिर. तो मुझे 50 पुल्स में Ayato और Raiden मिले थे. सिड मेरा भी राइडन पुल करने वाला है. मैं देखो अभी 119 पुल्स है मेरे पास, और राइडन का बैनर आते आते मेरे 200 प्लस हो जाएंगे पुल्स. I happen to have some time at the moment and came to take a look. I sometimes have my clothes custom made at this boutique, in any case, so we always have a lot to talk about. Ah, Neuvilette sure is lucky to have someone like you. Leave this to me. You should go meet up with Neuvilette. That's why I became regular streamer now. अच्छी बात है ना. Okay then, You we'll should. leave Kiara in your hands. Come on, let's go find Neuvilette. गाइज लाइक कर देना किसने नहीं किया अब तक तो. थैंक यू सो मच. हाइपर वेलकम भाई. फुरीना पे पुल करोगे? नहीं. मुझसे पूछ रहे हो तो नहीं. राइडन चाहिए अपने को. राइडन. वैसे तो मेरा न्यूविलेट पे पुल करने का मन है, बट नहीं, राइडन चाहिए अपने को. C6 निगलेट वेन. निगलेट क्या होता है?
अच्छा मतलब न्यूविलेट C6 Oh, न्यूविलेट you're back. होगा अगले Is जन्म में. everything all right? We ran into Clorande. She offered to help us protect Kiara. That is good to hear. I trust her abilities. It looks like Kiara is in good hands. अभी करूंगा शाम को ऑफिस को पता लगे कि झूठ बोल के छुट्टी ली है. तो ऑफिस वालों को तुमने सब्सक्राइब कराया क्यों है अपने चैनल से? We thought so too. Well, did you find any leads? I've been looking over the case records, specifically inspection reports submitted by Kiara and major cases I've judged over the past decade. Arkhon sir, my Neuvilette is 68-78. क्या बात है? I've come up with two plans. On one hand, I could start with Kiara and track down the group behind all this step by step. ऑफिस के आईटी वाले ने देख लिया, उसने वायरल कर दिया. ओहो, तो आशी तो सही कर रहा है, फेस कैम करना ही नहीं था. On the other, I could also analyze the conflicting interests of these major cases and confirm my suspicions if there is indeed a mysterious group that bears a grudge against me. They both sound like pretty solid plans, but can you really finish browsing through all these documents? That's a lot of reading even for Paimon. Don't worry. I'm a fast reader when it comes to official documents. After all, I have several hundred years of reviewing under my belt. True. We'll help you read through them. We have nothing else to do. Thank you. I will continue looking through the ones piled up on the desk, but feel free to browse through anything else in this room. Okay, about Ridesley. न्यूविलेट लाइक 4 आई रीड फास्ट. आए दैया स्पॉइलर मिल गया. 700 साल का है मतलब नॉट अ ह्यूमन. मैं जा रहा हूं. अच्छा तुम्हें स्पॉइलर नहीं चाहिए न्यूविलेट को लेके? क्योंकि स्टोरी क्वेस्ट करने के बाद, आर्कॉन क्वेस्ट करने के बाद न्यूविलेट की आइडेंटिटी सबको पता चल चुकी है. मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, कोई और स्पॉइल नहीं करेगा. इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू स्टे. अच्छा तुमने स्टोरी वगैरह कुछ नहीं की? फिर तो जाओ भाई, बहुत सारे स्पॉयलर्स मिलने वाले हैं. भाई आपको क्या लगता है एक्ट 4 के एंड में जो चाइल्ड वाला कट सीन है उसका क्या मतलब हो सकता है? यार उसका क्या मतलब हो सकता है जो एक्ट 4 के एंड में जो चाइल्ड वाला कट सीन था? यार आई थिंक जो चाइल्ड की जो मास्टर है स्कर, उसकी री एंट्री होने वाली है किसी ना किसी फॉर्म के अंदर. और इंटरल्यूड के अंदर जो डेंसली क्वेस्ट आएगी ना, वहां पर कुछ ना कुछ कनेक्शन जाएगा, ये मुझे लगता है. Fitz Chivalry Farseer, hello, welcome to the channel. How are you? चैनल में आपका स्वागत है. Wait, Genshin hinted that he is. अरे भाई क्या कहते हैं, किसी को तुम स्पॉइलर मत दो या तो कोई कर ना ले. बाकी अब तक तो इसको क्वेस्ट को आए हुए इतना टाइम हो गया, अब तक तो कर लेनी चाहिए थी. बट स्टिल इफ ही हैजंट डन इट. चैट मिस हो गई. मैं साइलेंट करके फोन पे छोड़ रहा हूँ. कोई और डॉक्यूमेंट रह गया? ये रह गया. अबाउट स्पीना दी रोजुला. Have you made any progress? Yes. We skipped through some of them, but there wasn't anything useful. Oh, there's so many documents lying around. Just how many cases have you handled? I would love to answer that question, but the truth is I've never made a precise calculation myself. हिमांशु, हैप्पी बर्थडे ब्रो, हैप्पी बर्थडे. कितने साल के हो गए तुम? If memory serves me Welcome right, to the there stream. should be at least 100,000 cases.
The documents you see are just a small fraction of what's really there. Whoa, that's a lot. Looks like the work of a Chief Justice isn't easy at all. That might be how it seems from another's perspective, but trials and official duties are, to me, simply routine. There are many documents 13 साल here. के Take a break हाँ, if you are tired. सबके सब लोग मजे ले लो आके मुझसे आज. You read Paimon's mind. All right, let us take a break then. अरे, सोफे पे बैठ जाओ, सो जाओ. क्या ब्रेक ले रहे हैं ऑफिशियली? Even though resting is a part of taking a break, shouldn't we at least talk about something? All this silence is making Paimon feel really awkward. Please pardon my lack of consideration. People rarely come to the Palais Mermonia for matters outside of work. To be quite honest, I am not sure what we should do. Would you like to have some drinks, perhaps? You must be thirsty after all that work. Yep. Ooh, drinks! Thank you! और ड्रिंक्स के नाम पर न्यूविलेट लाएगा पानी. खुद ही लेने जा रहा है. Paimon wonders what Neuvilette likes to drink. Oh, maybe he's a fan of really fancy wines. He seems like the type of person who'd own an entire winery. You know, like Diluc. No, no, no. He likes water. What's inside these glasses? It looks just like water. An astute observation. It is indeed water. So it's just plain old water? What did you think it was? Since you're the Chief Justice and all, Paimon thought you'd prefer something more sophisticated. Sophisticated like what, Paimon? साल्टी पत्ती मार के बैठे यार. थक गए ऐसे बैठे बैठे. This water is indeed very special. It would not be an overstatement to call it sophisticated. I believe you've already tried Fonta. In fact, there are many other drink factories in Fontaine, including those that specialize in packaging pure drinking water. Said water is sourced from all across Tevat, including Mondstadt's Cider Lake, Liyue's Chintsa village, and Inazuma's Konda village. Okay. Here is one of their latest products, water from Sumeru's Apam Woods. If I were to comment on their mouthfeel, the waters of Cider Lake warm the heart. The waters of Chintsa village have a poignant touch, while one might call the waters of Konda village placid. Distinct differences exist between the waters of each area. You will appreciate their intricacies once you taste them carefully. Okay. Really? Let Paimon try! Paimon को कुछ टेस्ट पता नहीं चलेगा. What do you think? Nope. Paimon couldn't taste any difference न्यूविलेट at लाइक all. पानी पानी Isn't पानी this अंकल just जी normal मुझे water? पानी पिला दीजिए. How regrettable. ये स्टोरी क्वेस्ट है It क्या? seems Yes, like you still न्यूविलेट have a स्टोरी long way क्वेस्ट to अनिल, go वेलकम टू द in finding स्ट्रीम. your tastes. गाइस लाइक दबा देना किसी ने नहीं किया अब तक तो. Hey, this doesn't have to do with refining our taste. Paimon's pretty sure most ordinary people can't tell the difference. How did you do it anyway? Oh, could it be because you're the Hydro Dragon? We are allowed to bring that up, right? Since no one else is around? Oh, Paimon's been wanting to ask this for ages. If you're the Hydro Dragon, why would you become Chief Justice in human society? Sorry. Paimon was just curious. You don't have to answer. पानी का टेस्ट अलग तो होता है भाई. अपने को तो क्या कहते हैं, बिस्लेरी के पानी और घर के नलके के पानी में फर्क नजर आता है. आरओ के पानी में और तो कोई फर्क नजर आता नहीं. There's nothing to hide. I was simply organizing my thoughts. I accepted this position because I wanted to seek out answers to questions that have perplexed me. Okay. Questions? Are there really things you can't figure out? Many, in fact.
But the one question that puzzles me the most concerns my own existence. In essence, I neither know why I was born in this form, nor do I understand where my long life should take me. घर का पानी इज ग्रेटर देन बिस्लेरी। हाँ मतलब ठीक है, डिपेंड्स कि कहाँ पर किस तरीके का पानी आ रहा है। वेल का पानी का थोड़ा अलग टेस्ट आता है, जैसे कि मटके का पानी पियोगे उसमें टेस्ट अलग आता है। I lost many memories from the moment I was born. The primordial sea, for example. I can only vaguely recall its connection to me, but I am unaware of what that connection is exactly. Perhaps the elemental dragons of other nations may have some form of an answer. However, they are scattered across all of Teyvat. Abruptly visiting could very well pose an unpredictable risk. भाई 400 साल से अब तक इसने सोचा नहीं कि मैं किसी दूसरे ड्रैगन से जाके मिल लूं, अपेप से जाके मिल लूं। True. Some of them have very unique personalities. कॉपर के too. बर्तन के पानी का, उसका मैंने इतना टेस्ट किया नहीं। कॉपर के बर्तन का पानी में इतना टेस्ट नहीं I किया have been मैंने। holding on to these unanswered questions for a long time. But there is one thing I've discovered along the way. My emotions easily resonate with those of others. Even I don't have the slightest idea what they mean. My guess would be that there are at least some similarities between humans and myself. By observing their behavior, perhaps I could one day understand the meaning of my existence. Okay. Have you made any progress then? Perhaps, but I find such progress difficult to describe. As an outsider, chances to engage in meaningful interactions with others are few and far between. अपेप न्यूविलेट, क्या क्या सोचते रहते हो भाई हैं? टॉयलेट का पानी बेस्ट होता है, टेस्ट करके देखो। करो करो टेस्ट करो, बताना हमें कैसा लगा, खट्टा खट्टा लगा या क्या कहते हैं नमकीन नमकीन लगा। That's why I'm quite thankful for this chat. Such opportunities are rare. Alas, time is limited. We should move on with our investigation. Are we gonna continue reading these documents? Paimon's getting dizzy already. I wasn't able to find any leads even after browsing through most of the documents. But while we were on the topic of water a moment ago, another idea came to me. Water? Do you mean... That's right. The Fountain of Lucine is where all of Fontaine's waters converge. It is the vessel of countless memories and emotions. If there really were an organization attempting to use Melusines against me, they should also hold an intense resentment towards me. Perhaps we'll be able to find some new leads by sensing the hydro element within the fountain. Huh. Why didn't Paimon think of that? Come on, let's go take a look! Perhaps we should go. There shouldn't be too many people near the Fountain of Lucine during the evening. आयुष्मान थापा, वेलकम 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 टू द स्ट्रीम। क्या हाल चाल दोस्त? हाउ आर यू? अरे फाउंटेन ऑफ लुसीन तो मैं ऐसे ही जा सकता हूँ, बाहर दौड़ने की जरूरत है। हाउ इज इट गोइंग? Monsieur Neuvilette? I probably shouldn't disturb them. Looks like we got lucky today. There's hardly anyone around. अब यहाँ पे फुरीना की रोने की आवाज आएगी। What should we do next? Oh, Traveler, can you still hear the voices from the fountain? Perhaps leave the investigation to me. I need you to take a few steps back and keep a safe distance. बढ़िया हूँ, आप कैसे हो भाई? मैं बहुत बढ़िया। आज थोड़ा स्ट्रीम लेट होगी स्टार्ट करने में, बट एवरीथिंग एल्स इज रियली रियली फाइन। और कैसा चल रहा है तुम्हारा गेंशिन HSR जो भी खेल रहे हो? अरे क्वेश्चन था, ये स्टोरी, ये आर्कॉन क्वेस्ट करने के बाद जो फाउंटेन के नीचे जाने से रात में 12 बजे जो आवाज़ आती है वो चेंज हुई है क्या? लगता नहीं, एक बार भी जाके देखूंगा। A safe distance? Neuvilette, what exactly are you... Whoa, it's glowing! अभी जाके देखूंगा कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। पहले तो फुरीना के रोने की आवाज़ आती थी ना, नाउ आई हैव टू सी कि वो आवाज़ आ रही है कुछ और आ रहा है। पहली बार किसी वाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर का कुछ आया है, वरना यूजुअली ब्लैक होता है और वाइट लिखा हुआ आता है।
ये कहाँ पहुंच गया बे? अरे ना, यहाँ किसी के रोने की आवाज आ रही है, ना मैं स्प्रिंट कर पा रहा हूँ, ना मैप खोल पा रहा हूँ। ये कहाँ आ गए हम? 1950s की फिल्मों में कैसे आ गए हम? ओ यहाँ खड़े हैं न्यूविलेट और मेलुजीन। अभी तो मैं गेंशिन एंड होंकाई, अच्छा होंकाई थर्ड खेल रहे हो। होंकाई थर्ड के प्लेयर्स बहुत ज़्यादा कम है, गेंशिन और एचएसआर के फिर भी मिल जाते हैं। लायन कहाँ से आया? लायन कहाँ पर है? लायन कहाँ है? ये तो फाउंटेन ऑफ ल्यूसीन है, ये बहुत पहले की दिखा रहा है। तुम देख रहे हो? दिस प्लेस इज वेरी ओल्ड। ये शायद जब फाउंटेन ऑफ ल्यूसीन बना था तब की बात है। ये लाइन पहले नहीं थे ना? आसपास का एरिया बड़ा पुराना सा लग रहा है, जैसे यहाँ पे कुछ अभी कंस्ट्रक्शन ना हुई हो। Carol. Thank you for bringing us here, Monsieur Neuvilette. The court of Fontaine is truly incredible. There's so many things I've never seen or heard before. Sea lion देखने में ऐसा नहीं होता। Sea lion I देखने वाला understand होता है। your excitement, but there's no need to thank me. Although I have responded to your wishes, it was not without personal interest. Meluzine's special sight make them especially suited for joining the Maréchaussée Phantom. I'm certain you'll become an indispensable part of Fontaine's detective force. I know, but I'm really glad to be of help. Not only can I repay you for your kindness, but also, it feels like my life has become a lot more meaningful. But a meaningful life also comes with its risks. It's definitely the safest to just stay in the village, but I want to see the outside world nonetheless. In truth, I've never really understood the purpose of my existence, or what I'm capable of contributing to this world. Don't worry, Karole, हम तुम्हें बताएंगे तुम क्या कर सकती हो, Karole. For almost 20 years, we've stayed in our village without finding any answers. That's why we wanted to leave our village and look for the meaning of our existence elsewhere. I understand your confusion. In fact, I feel the same way. I too came here for an answer to my questions about my own existence. Really? Could you tell us what we should do to fit in as you did? आओ विवेकन आओ, बहुत जल्दी आ गए। The truth is, many people threw rocks at us today and told us to go back to our village. It hurt a lot when they hit me in the head, and I tried really hard not to cry. किसी ने करोले को पत्थर मारा ना, मैं उसे गर्दन मोड़ दूंगा। सो रहा था, सो जाओ। Logically speaking, सो जाओ। both time and effort are essential when different species attempt to peacefully coexist. It will be a difficult road ahead, with countless obstacles to overcome. अभी कहते हैं, पता घर में भी अपने बच्चों को, गली में बच्चों को, मेरे पता क्या होता है, मैं यूजुअली कभी किसी बच्चे को ऐसे डांटता नहीं हूँ। मुझे कोई बच्चा अगर क्या कहते हैं जानबूझ के कुत्ते को पत्थर मारता हुआ दिख जाए ना, एक बार तो मेरा एक बच्चा, छोटा बच्चा था, 4-5 साल का था, है ना, कुत्ते को पत्थर मार रहा था। मैंने उसे ऐसा हड़काया, उसकी रूह तक कांप गई अंदर से। फिर मुझे लगता मैंने उसको ज्यादा ही बोल दिया बेचारे को, है ना। बच्चे होते हैं इस तरीके से, बट ठीक है, उनको समझाना चाहिए। यार एक बात बताओ, हम लोग सब जगह के एनपीसी से मिले हैं, बट नेटलैंड का एक भी एनपीसी से नहीं मिले। वाई? क्योंकि नेटलैंड को कुछ ज्यादा सीक्रेट रखा जा रहा है, पता नहीं क्यों। आई हैव नो आइडिया कि नेटलैंड के अंदर ऐसा क्या है। उसका एक रीजन ये भी है कि नेटलैंड के बाकी जो कंट्रीज के एनपीसीज हैं ना, ये ट्रैवल करते रहते हैं, कभी इधर से उधर, इधर से उधर। पर नेटलैंड जिस तरीके से बना हुआ है, नेटलैंड इज मोस्टली ट्राइब बेस्ड। यहाँ पे ट्राइब्स है बहुत सारी, एंड दे नेवर फेल्ट द नीड कि हम बाहर जाके कुछ देखें। दैट्स वाई हम नेटलैंड के शायद अब तक किसी एनपीसी से नहीं मिले हैं, क्योंकि नेटलैंड बड़ा ही सेल्फ कंटेन्ड है। ऐसे तुम इनाजुमा से भी नहीं मिले थे, कोई भाग भाग के आ जाता था तो मिल लेते थे। बट आई डोंट थिंक नेटलैंड के एनपीसीज जो हैं दे ट्रैवल आउटसाइड, इस वजह से नहीं मिले। Different identities and ways of thinking all contribute to strengthening the barrier between one another. अब तो Removing उठ it will be गया। no easy feat. चलो चाय वाय पियो, थोड़ा मुंह हाथ धो। There aren't many suggestions I can share.
Because just like you, I haven't fully integrated into this society. Despite my social status, I am still an outsider. Oh, I see. Let's all do our best then. I'm confident that we'll find the meaning of our existence one day. Good girl, Karole. I believe in you, but you shouldn't lose sight of the difficulties ahead. If you run into any trouble, I suggest that you inform Vautrin, the captain of the Special Security and Surveillance Patrol. Huh? Is he the person I met in the Palais Marmonia earlier? Yes? Do you have any concerns? That stone-faced human. He didn't even bother to look at me when I tried talking to him. It felt like he wasn't interested in anything but work. He is an earnest man. There will be plenty of opportunities to work together in the future, so please try to get along. Okay, let's go to the next memory. चाय भी बन गई, क्या बात है, क्या बात है। मैं भी पीऊंगा चाय यार। कितने बज रहे हैं? अभी तो 4:20 हो रहे हैं। शाम को 5 साढ़े 5 चाय बनेगी। Hello, can I help with anything? करोले इनाजुमा का तो सुने थे स्टोरी में हम लोग की उधर सबको डिग्री इसलिए किसी को आने जाने की नहीं देते, पर क्या कहते हैं नेटलैंड का आई गेस ऐसा ही है कि नेटलैंड के लोग कुछ जरूरत नहीं पड़ती आने जाने की, इसलिए। Thanks, but no need. बादेरिको, अच्छा मतलब कि लोग मेलुजिन्स को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, ये क्वेस्ट है। Oh. ओह, 3 लड़कियां। Hello, I'm Carol, a Melazine. Is there anything you need help with? अच्छा कल्चर वाला चीज, हाँ। Get away from here! I'm calling the guards. Please, calm down. I don't mean to cause any harm. Hard to say. Yeah, we should probably stay away from these monsters. Haven't you realized? Strange incidents have been increasing ever since they came. Damn. Why should we trust this species from who knows where anyway? I can't believe Neuvilette allowed them into the court of Fontaine just like that. जब तुम्हारे घर में सब कुछ तो क्यों ही बाहर जाना? क्या चाय की बात कर रहे हो क्या? Exactly. अच्छा, नेटलैंड की बात कर रहे हो। Justice even granted them official positions. Not only that, but they're now responsible for investigating cases as well. I swear, there's some hidden agenda at play here. So-called Chief Justice. ग्लोडोमियर अपनी जबान को लगाम दे। Go away! Quit acting innocent! I'm not leaving. I won't let you say bad stuff about him. We joined the miHoYo Phantom and solved lots and lots of cases. We've never done anything wrong. अब उसकी शक्ल देखो कितना क्यूट है और तुम इनको मॉन्स्टर बोलते हो। वही तो, कितनी प्यारी है बेचारी, देखो। Solving cases? With Neuvilette in cahoots with you? You could have fabricated it all, and no one would know. So tell me, how can you guarantee that you Melazines aren't involved in anything that occurred recently? You know, मैंने अब तक स्टोरी नहीं की। कोई नहीं, अब ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर लो, देख देख के। Didn't I tell you before? Don't go advertising if you're not a good talker. Vautrin? Aside from spreading unjustified rumors, if you continue insulting members of the miHoYo Phantom, the Special Security and Surveillance Patrol has every right to subject you to interrogation. पिटी बनने के चक्कर में दिया मिल गई। मुझे वो पसंद है, पर सब लोग क्यों बोलते हैं she is not worth it? Because she is not worth it. उसके यूज बड़े लिमिटेड हैं दिया के लिए, यूज ज़्यादा यूज है नहीं कुछ, ताकि मैं स्पॉयलर्स ना दे दूं। चलो अच्छी बात है, कोई नहीं, अब हमारी स्टोरी हो जाएगी, उसका तुम मजे से अपनी स्टोरी पूरी करना। There have indeed been an increase in cases recently, perhaps due to the shifting currents of conspiracy, and I understand your concern. However, there's been no evidence pointing towards Melazines being involved. Why they hating them, man? Because humans ऐसे ही होते हैं। हमसे जो भी डिफरेंट दिखता है, दिखने में भी डिफरेंट होगा ना, हम उनको आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते। Even the captain of the security patrol is on their side. Neuvilette's newly reformed police force is already corrupt to the core. I use the on dendro teams only. अच्छा, उसके लिए, वर्जन के लिए। How can two completely different species possibly coexist? That's why. जो लाइन बोली ना इसने, ये चक्कर है। आप किसी के कंट्री के अंदर टूरिस्ट बन के जाओ,
मैं दुनिया की किसी भी कंट्री में टूरिस्ट बन के घूमूंगा ना, मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, टूरिस्ट है, घूमने आया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे घर लेके रहने लगूँ, लोगों को ना दिमाग में फिर चढ़ता है, अरे यार यहाँ रह रहा है। तभी तो इतना सारा दुनिया में क्या कहते हैं ये क्राइसिस है इन चीज़ों को लेके, व्हाट डू यू से, माइग्रेंट क्राइसिस है इतना सारा, ठीक है। बिकॉज पीपल आर नॉट वेलकमिंग टुवर्ड्स एनीवन जो उनसे देखने में डिफरेंट हो, जिनका कल्चर उनसे डिफरेंट हो। मेरे दोस्त की शक्ल गंदी है, मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया उसको। वीवी, उसे शीशा बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ मिरर। You heard that? Yeah. I don't understand. Why won't anyone believe us? इंडिया के अंदर ही ऐसे होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, इंडिया के अंदर ऐसे होता है भाई, इंडिया के अंदर ऐसे होता है। ये तो कोई वो वाली बात ही नहीं है। मेरे नॉर्थ ईस्ट के दोस्त थे, ठीक है, मैं उनके साथ एक बार वहाँ गया, क्या कहते हैं, 2 लड़कियाँ थी और एक बंदा था, तीनों नॉर्थ ईस्ट के थे, ठीक है, मणिपुर के। मैं उनके साथ उधर गया हुमायूं टूम, हुमायूं के मकबरे में, ठीक है। हम टिकट ले रहे, तो अब हुमायूं के मकबरे में एंट्री टिकट 10-15 रुपये की है इंडियंस के लिए, फॉरेनर्स के लिए 500 रुपये की टिकट है, जैसे कि वहाँ पर भी है इधर अपना ताजमहल के अंदर भी। फॉरेनर्स की टिकट 500 रुपये, इंडियंस की टिकट ज़्यादा नहीं होती, 15, 20, 25 ऐसे रुपये की होती है ना। उसने बोला कि टिकट, आपकी टिकट होगी 1600 रुपये कुछ की है, मतलब 1550 रुपये। मैंने कहा हैं 1550? करेगा, आप फॉरेनर के साथ आए हो ना। वो लड़की जो पीछे मणिपुरी खड़ी थी ना, आके बोली भैया हम यहीं के हैं, तब जाके उसने टिकट दी है। इतना इंडिया में रेसिज्म भाई, बहुत कैजुअल रेसिज्म इंडिया के अंदर। क्या बात कर रहे हो? There have been rumors saying that you were born from calamity and that you inherently bring danger to those around you. जहाँ मैं रहता हूँ ना, यहाँ पे बहुत सारे अफ्रीकन रहते हैं, अफ्रीकन स्टूडेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स में यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं आसपास, ठीक है। और तुम्हें पता है अफ्रीकन्स को लेके इंडियंस की तो क्या ही मेंटालिटी है, ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। माना कि कुछ हैं ऐसे जो क्या कहते हैं बहुत सारे ड्रग्स वगैरह में पकड़े जाते हैं, नाइजीरिया वगैरह के, है ना, न्यूज़ में आता है, जो कि मैं मानता हूँ होता है। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो अपने अपने घरों से यहाँ पे सिर्फ पढ़ने के लिए आए हुए हैं, आते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, और अपना चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तुम ऑटो वाले से को, अरे भैया हम तो उनको नहीं बिठाते, आदमी खा जाते हैं। मैं तो सर ही पकड़ लिया एक बार, मैंने कहा हे भगवान। श्रीलंका में भी होता है, वही कह रहा हूँ, ये भाई बहुत है। या बट अपने इधर नहीं है, तुम कहाँ पे रहते हो भाई? There are countless negative rumors about you floating around in Fontaine. It's near impossible for you to become a part of this society. Best if you give up before it's too late. Monsieur Neuvilette said that we needed to put both time and effort in. I don't know how long it'll take, but I can at least try making my best effort. I still want to try a little harder. झारखंड? Thank you for bailing me अच्छा, झारखंड में out. सभी की कलर के हैं इसलिए। और ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें बताऊं, ये सिर्फ यहीं की बात नहीं है। मेरी एक फ्रेंड है और वो शी इज़ वेरी फेयर, मतलब कि बहुत गोरी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो गई यहाँ पर घूमने के लिए, सिक्किम वगैरह। सिक्किम के लोग उसके साथ फोटो खिंचवाने लगे, जैसे हमारे फॉरेनर्स के साथ फोटो नहीं खिंचवाते, फॉरेनर्स के साथ सिक्किम के लोग उसके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं, बताओ। भाई उनको क्या पता, जस्ट फॉर एजुकेशन नाइजीरिया से इंडिया आना है। नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि देयर आर बैड एप्पल्स एवरीवेयर, ठीक है, देयर आर बैड एप्पल्स एवरीवेयर, बट दैट डजंट मीन कि आप सबको उसी लेंस से देखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और कुछ तो इतने अनसब्सटेंशिएटेड रूमर होते हैं, इतने ज़्यादा, कि मैं क्या ही बोलूँ। आशिदो WTF। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ यार। Okay, I won't be taking any more of your time. I painted a lot of flyers last night, so I have to stay and hand them out to everyone. Give them to me. You're not gonna take them away, right? We'll hand them out together. The faster we get this done, the sooner we can head back. बिल्लो बग्गे बिल्लियाँ दा की करेंगी? बिल्लो बग्गे बिल्लियाँ को स्कूल लेके जाएंगी और उनको एजुकेशन देंगी, ताकि वो पढ़ लिख कर ऐसे सवाल ना पूछे। बाय द वे वेलकम गाइस, लाइक लुक दबा देना किसने नहीं किया अब तक तो। ओके, अब कहाँ जाना है आगे? क्या चल रहा है? न्यूविलेट की स्टोरी क्वेस्ट। Monsieur Neuvilette, what's this? Medals of Peace, awarded to you and Vautrin. Thank you for your continued dedication in the past 5 years.
You've taken one small step forward in helping Melusines gain the trust of humans. यहाँ सब एक जैसे दिखते हैं। यार पता है क्या, देखो गलती ये भी नहीं है। इंडिया इज, तुम्हें पता है इंडिया को इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इट इज अ सब कॉन्टिनेंट मोर देन अ कंट्री। जिस तरीके से यूरोप एक कंट्री बन जाए, ठीक है, कहने को तो एक कंट्री होगी, और दे बिहेव, यूरोप बिहेव्स लाइक वन कंट्री, क्योंकि आना जाना फ्री है, जैसे इंडिया के अंदर है, कोई कहीं पे भी चला जाए, बट स्टिल दे हैव देयर डिफरेंट कल्चर्स ना। वो चीज़ है हमारे यहाँ पर ना, कई बार बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हैं, और वो चीज़ कभी कभी बैकफायर कर जाती है। I think I'll pass. Hey, don't say that. We wouldn't have made it this far without you. Alt RA मतलब? It won't be long before Melusines begin living peacefully with the humans. Just the thought of it makes me happy. Tushar Vyas, thank you for subscribing. Welcome to the channel. How are you, bro? What are your views on the Arkhon quest? Arkhon quest so far is really nice. It has a lot of Bollywood masala type का feeling आ रहा है उसके अंदर, जैसे हिंदी फिल्मों के वो नहीं होते कोर्ट ड्रामा, जज साहब फाड़ के फेंक दीजिए कानून की सारी किताबें, वो टाइप की फीलिंग आ रही है उसके अंदर। इन्वेस्टिगेशन तो मज़ा तो अच्छा आ रहा है ना, और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से चल रही है इसका जो फिनिशिंग होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। आई बिलीव दैट। अच्छा अल्ट्रा, ओके, अल्ट्रा का तुम नाम रखा, Alt+R+A। कुछ तो ट्विस्ट होगा स्टोरी में, बहुत ज़्यादा ही सीधा चल रहा है। ये वाली में अभी आएगा। मैं तमिलनाडु गया था एक बार स्कूल ट्रिप से, तब पता चली। क्या पता चली तुमको तब? Don't keep your hopes up. We've barely scratched the surface. There's still a long way to go before that dream of yours comes true. You blockhead! Don't ruin the mood! Vautran brings up a good point. The trust humans have placed in you is still very fragile. Any small incident could undermine the hard work you've put in. Please be on your guard for the next few days. Yes, sir. Okay, got it. आशिदो भाई चले गए कि वो देखे क्लिफ हैंगर देखे, क्या पता चला। I felt the prison part was a little slow and फुरीना के साथ काफी इंजस्टेड किया to show that Neuvilette is more superior. Medal of Peace? Peace isn't going to give us back what's rightfully ours. Okay, तो इसके अंदर दो चीजें हैं। प्रिजन वाला पार्ट बीच में बहुत स्लो था। आर्कन क्वेस्ट जो लेटेस्ट वाला पार्ट आया उसका फर्स्ट और लास्ट पार्ट बहुत फास्ट था, मतलब इट वाज गुड पेस्ड। बीच वाला काफ़ी स्लो हो गया था, आई एग्री। लेकिन फुरीना के साथ तुमने जो इंजस्टिस किया है ना, आई गेस उसके पीछे भी एक स्टोरी है जो आगे आएगी। फुरीना की डबल पर्सनैलिटी है, तुम्हें पता है। वो एकदम से क्या कहते हैं नॉर्मल हो जाती है और एकदम से शी स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक स्केयर्ड माउस, ठीक है। तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी तो है जो हमें फिनाले के अंदर पता चलेगी। दैट्स वाई मुझसे पूछते ना फुरीना के बारे में बताओ, व्हाट आर योर व्यूज़ फुरीना के बारे में, तो आई रिजर्व माई जजमेंट। अभी मैं कुछ भी उसके बारे में नहीं कर रहा, क्योंकि देर आर उसकी मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी विच शोज दैट शी इज़ नॉट द हाइड्रो आर्कॉन, जो दिखाती है चीज़। बट सिंस शी इज़ मतलब वो लॉन्च ही ऐसे हो रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखते हैं, आने दो। वैसे इंडिया रेसिस में टॉप 1 में आता है, इफ सम पीपल डोंट नो दैट। यहाँ के इंडिया में बहुत रेसिज्म है। अरे आई नो भाई, वी ईट रेसिज्म फॉर ब्रेकफास्ट इंडिया के अंदर। कोई मतलब वही नहीं है भाई, मुकाबला नहीं हम लोगों का इस मामले में। हम काले, हम सब हमको कालिया बोलते। देखा कुछ तो हुआ लग रहा था। Are you sure we should do this? We're no match for Neuvilette, even with all our powers combined. What if... With all our powers combined, I am Captain Planet. क्या नाम है इसका? Suave Goth. Nah, not gonna happen. As long as he remains in his position, there's no chance he'd take us out personally. There are rules even he must comply with in the political sphere. Unless he wants to become an enemy of Fontaine. Mm-hmm. So quit worrying and just go ahead with it. I've already planned out the murder. Once we lay the blame on the Melusines as the person who brought them to the court of Fontaine, Neuvilette will be left with no excuse. Murder की बातें हो रही हैं. I guess you're right. Ugh. If he just left things the way they were, it never would have come to this. But he's forced our hand. Time to teach him a lesson. Dragon Sovereigns का सामने क्या ही कर लोगे तुम लोग? इनको नहीं पता ना, they don't know that he's a Dragon Sovereign. इतने लोग कहाँ से आ गए बे? Turn the murderer in! Melusines can't be trusted! That goes for Neuvilette too! Damn. Peaceful coexistence? What a joke. Get out of the court of Fontaine and don't ever come back.
इधर जाने का है? ओ वहाँ पे। हाँ वो तो है, आई एग्री विद दिस। देखते हैं, बट आर्कॉन से आर्कॉन वाली फील ही नहीं आ रही। वो तो स्टार्टिंग से नहीं आ रही है। एज सून एज शी केम आर्कॉन वाली फील ही नहीं आई है। एंड देयर आर लॉट ऑफ सटल हिंट्स कि शी इज़ नॉट द एक्चुअल आर्कॉन, विच कुड बी ट्रू। एक देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, हो सकता है कि दिस इज थ्योरी, ये एक थ्योरी है कि ये फुरीना पता आर्कॉन क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ द प्रोफेसी। प्रोफेसी क्या है कि जो प्राइमोर्डियल सी है वो राइज होगा, पूरा का पूरे फॉन्टेन के लोग उसमें बह जाएंगे, डूब जाएंगे और क्या कहते हैं डिजॉल्व हो जाएंगे। ओनली द हाइड्रो आर्कॉन विल रिमेन क्राइंग ऑन हर थ्रोन, ये प्रोफेसी है। तो फुरीना हो सकता है कि इगीरिया के मरने, इगीरिया जो प्रीवियस हाइड्रो आर्कॉन थी उसके मरने के बाद फुरीना ने अब तक हाइड्रो आर्कॉनशिप जो है ना सिर्फ नाम के अंदर ही एक्सेप्ट की है। शी हैज़ नॉट ट्रूली एक्सेप्टेड बीइंग एन आर्कॉन, क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो आर्कॉन बन गई तो प्रोफेसी ट्रू हो जाएगी, क्योंकि प्रोफेसी के अंदर तो लिखा है ना ओनली हाइड्रो आर्कॉन विल रिमेन वीपिंग ऑन हर थ्रोन। तो अगर कोई हाइड्रो आर्कॉन होगा ही नहीं तो प्रोफेसी ट्रू कैसे होगी? तो आई गेस ये भी एक वजह हो सकती है कि उसने अब तक हाइड्रो आर्कॉनशिप पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं की है फुरीना ने। ये भी रीज़न हो सकता है, दैट्स व्हाई शी डज नॉट हैव नोसिस। ये एक थ्योरी है अभी। आर्कॉन है बट आर्कॉन नहीं, आर्खून। यहाँ देखो मर्डर की बात हो रही है। ओके The results of the investigation are in, Captain Vautrin. Go on. There is no direct evidence, but reasonable inference indicates that the ones controlling the situation are supporters of the old regime, whose interests have been undermined by the reform. They tricked Miss Carroll into going to the crime scene and pressed charges against her. After that, they incited panic among the people in order to make Monsieur Neuvilette confess to his mistakes and yield up power. Okay. The guards were stopped by the enraged mob and couldn't intervene in time. Miss Carroll chose to sacrifice herself to pacify the situation. Sacrifice? What do you mean by sacrifice? मार दिया उसको? येलान नीड more energy और HP. I guess अगर आपको येलान का जो ER है 200 है, 200, 201, 210 के राउंड है, तो ठीक है। उसके बाद you can give all HP. क्रिट रेट क्रिट डैमेज का ध्यान रखते हुए ये ध्यान रखना। Big whale in the ending scene where we see child is the real Archon. Maybe. ठीक है। By the way, हमको स्टार्टिंग से पता था कि जो फॉन्टेन की स्टोरी आर्कॉन क्वेस्ट होने वाली है, इट इज़ गोइंग टू बी मोर पॉलिटिकल, क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन फ्रांस, और फ्रांस के अंदर जो हमेशा पॉलिटिकल अपहीवल बहुत स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग, दिस डज सीम लॉजिकल। नाउ आई एम एक्साइटेड अबाउट द 4.2 फील फाइनली नो। यस, आर वेल इज अल्ट्रा विद C5 and R3 C5 and R3 Yelan. And she called me a blockhead. A little investigation would have cleared things up. Why didn't she wait until we'd established the truth? She didn't have to prove her innocence like that. The situation had rapidly escalated to a physical altercation between infuriated citizens and the guards. Miss Carroll might have thought there was no better plan. Ooh, and a C6 Bennett. C6 Bennett तो मेरा भी है, उसकी 6 कॉन्सोलेशन मैंने भी एक्टिव नहीं की है, लेकिन है तो मेरे पास भी C6 Bennett। गाइज लाइक कर देना किसी ने अब तक लाइक नहीं किया हो तो, थैंक यू वेरी मच। आर्कॉन स्टोरी का कंक्लूजन कौन से अपडेट तक हो सकता है? आई गेस अगले वाली, या तो अगले में हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो सुमेरु आर्कॉन क्वेस्ट की तरह उसके 4 पार्ट जाएंगे, या उससे अगले में होगा। बट आई गेस मैक्स टू मैक्स 4.4 तक हो जाना चाहिए, मैक्स टू मैक्स, सॉरी 4.3 तक, क्योंकि 4.0 में पहली आर्कॉन क्वेस्ट आई, 4.1 में दूसरी आई, 4.2 में तीसरी, और 4.3 के अंदर चौथी। सोचो ना, नोसिस नहीं मिला फुरीना के पास, क्या पता न्यूविलेट एक मछली में नोसिस भर के रखा है और उसको मॉनिटर कर क्या विजुअल दिया तुमने मेरे दिमाग में। एंड इट एक्चुअली इज गुड। यस, वेट, इज कैरोल डेड? मैं वही सोच रहा हूँ, सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है? उसने खुद को पकड़ने दिया या मर गई, वही समझ नहीं आ रहा मुझे। Captain Vautrin, should I present these results to Monsieur Neuvilette right away? There's no need. Notify the guards to restrict public access to all information. Restrict access to? इंटरनेट बंद करने की। Are you planning to? इंटरनेट बंद करने की धमकी दे रहा है। There's something I've never told Carol. I had a little sister named Ilaria who passed away when I was very young.
She's just like Carol in every possible way. Innocent, kind, always believing the best of people. People like her are the most vulnerable to deception and betrayal. From the moment I met Carol, I knew that she'd be easily manipulated by others. I kept a cold demeanor and tried lecturing her into giving up. Benny C6 doesn't really make a difference on new characters or even many old characters. हाँ, I know. पर वही है ना कि एक बार जब तक मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो जाऊँ ना, मैं नहीं करूँगा C6. Looks like she was unfazed by that. जैसे कि मेरे जैसे राइडन हो गई और जो मेरे DPS मेन DPS मेरे कौन है, राइडन है, आयातो है और चाइल्ड है और योइमिया है और वॉन्डरर, ये मेरे मेन DPS हैं. इनके नॉर्मल अटैक को तो वैसे भी आप ओवरराइड नहीं कर सकते. अगर योइमिया का नॉर्मल अटैक ओवरराइड हो भी जाता है इन नॉर्मल स्टेट तो वैसे भी वो पायरो DPS है, वो तो और अच्छा डैमेज देगी. बट आई एम यूला मेन. हाँ, तुम्हें नहीं करना चाहिए. Yes. In fact, some of her spirit must have rubbed off on me instead. Because I too began working towards that pie-in-the-sky dream of hers. I should have known. Those cowards don't have the guts to confront Neuvilette. They even avoided causing trouble for me. They were after Carol all along. बीवी का हुताव डिलीट कर दो. मैं कहाँ से कर दूँ भाई इसका हुताव डिलीट? C6 डिलूक के लिए अच्छा है, C6 डिलूक के लिए भी अच्छा है, पर C6 डिलूक है कितने लोगों के पास? Can you understand how I feel? Right now, there's only one thought on my mind. Only through bloodshed can their debt be repaid. Ooh. I understand, but I'm certain Monsieur Neuvilette wouldn't accept that as a solution. ये सबको मारने की बात कर रहा है क्या? That's exactly why we need to keep this a secret. Give me the list of suspects. What happens after this has nothing to do with any of you. मेरे पास C2 डिलूक है, मेरे पास एक भी डिलूक नहीं है. I will take responsibility for everything. इस अकाउंट में एक भी डिलूक नहीं मेरे पास. वेरी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म. पूरी की पूरी स्टोरी क्वेस्ट जो है जिस तरीके से दिखा रहे हैं ये बहुत सही है. आपने ओवरवॉच 2 देखा है? नहीं भाई, ओवरवॉच 2 देखा है या खेला है? दोनों ही नहीं किया. Not everyone have my account, so I am safe. Case today, and the criminal is Captain Vautrin of the Special Security and Surveillance Patrol. हैं? उसने बंदे मार दिए क्या? Vautrin ने? Elan 260 ER with emblem set, 34 HP, 54 180 CR/CD. Is it okay? Very nice. बहुत सही जाए. अगर येलान को खुद के वेपन दे दोगे तो तुम्हारा CD बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. It's still nice. Only Arkhon sir have my account currently. तुम्हारा अकाउंट मेरे पास कहाँ है बे? मैं बेरंग तू चमक है, फर्क है. कुछ भी गाना गाते रहते हैं यार लोग. गाइस लाइक दबा देना किसी ने नहीं किया अब तक तो. Apparently, he resorted to personal measures to seek revenge for Carol and settled the score with the group that framed his friend. Ooh. Hey, why aren't you saying anything? I'm thinking we should try our best to bail him out when the trial commences. Bail him out? Why? Shh, keep it down. Haven't you realized? Both Vautrin and Carol are Neuvilette's most trusted subordinates. After everything that happened to Carol, Neuvilette's guaranteed to do everything he can to keep Vautrin around. अगन से 12 विश ऑन वेपन बैनर भूल गए. ओ हाँ, लेकिन उसके बाद मैंने तुम्हारा अकाउंट वो कर दिया, लॉग आउट कर दिया था. मुझे याद भी नहीं उसके बाद. मेरा अकाउंट किसके पास नहीं है? सबके पास. Besides, now that the old regime बदला ले लिया भाई ने. Neuvilette's status is secure as can be. As long as we redirect public opinion, Neuvilette will be able to give Vautrin a reprieve. The benefits are endless. और एक चीज नोटिस की है, यहाँ पर अब तक हाइड्रो आर्कॉन की बात नहीं हुई है, न्यूविलेट की बात हो रही है. फुरीना कहाँ है? ये 400 साल पुरानी बात है. ये सारा का सारा मैटर 400 साल पुराना है जो यहाँ दिख रहा है ऑलमोस्ट. और फुरीना जो है 500 साल पहले बन गई थी आर्कॉन. वेयर इज शी? सर का मदरबोर्ड गीगाबाइट का है, B760M है. B760M. ये बात कहाँ से अचानक उठी भाई? Vautrin sought vengeance for his friend for a valid cause. This represents the justice he upholds. Please think about it. If the same thing had happened to you, wouldn't you feel the same way he did? Yeah, that's right. This whole thing started because of those despicable cowards who levied false accusations against Carol.
How could Vautrin be declared guilty for seeking revenge? नेम आता है अकाउंट कौन कौन से डिवाइस में है. अच्छा तो मेरे मदरबोर्ड तक का नाम आ जाता है उसके अंदर. क्या बात है. Monsieur Neuvilette. Mr. Vautrin is innocent! He's innocent! Ooh. Order! I acknowledge your arguments. Vautrin, your revenge could be seen as a form of justice. लेकिन अगर इसने बंदे मार दिए इसका मतलब कैरल मर गई है वाकई में. I understand your decision, which is why I cannot help but feel regret and even grief about the judgment I must now impose. Personal justice does not equate to justice as defined by the law. To execute your plan for revenge, you abused your authority and conducted informal executions. Your actions have thus violated the law. Executions मतलब मार दिया इसने. Therefore, you will be declared guilty. What? That can't be! Monsieur Neuvilette, please give this a little more thought. He has done so much for Fontaine. अरे अभी तो ऑरेटरीज, मैकेनिक, डेनालीज, कार्डिनल भी तो है. Vautrin, my friend, is there anything else you want to say? अरे बाहर बारिश होनी शुरू हो जाएगी because he's sad. Neuvilette, what have I done to deserve this? I've closely followed every one of your orders. Can't you see? Everyone in this room believes that I'm innocent. Why can't you just let me off? यही बोलेगा. Is this what justice means to you, Neuvilette? Is this what justice means to you? Answer me, Neuvilette. Order. Since there have been no further objections, the oratrice will now deliver the final verdict regarding the charges against Mr. Vautrin. According to the judgment of the oratrice, mécanique, d'analyse cardinal, Mr. Vautrin will be declared guilty. अरे अभी आया कहाँ है? Goodbye, Monsieur Neuvilette. This all happened because of Carol's naive ideas. अब लोग कैरल को पकड़ लेंगे. How can वो तो मर गई different है. species peacefully coexist anyway? Apologies, it seems like my memories got the better of me. I हमने tried सब my देख best लिया. to suppress the power of Hydro within myself, but it seems like it still caused the emotions within the Fountain of Lucine to boil over. कैरल डेड. वही मैं सोचूं यार बंदा बंदी को मार दिया. इतनी प्यारी बंदी को मार दिया इन्होंने. Due to my negligence, the overflow of emotions and memories must have affected you as well. Are you all right? I'm fine, bro. Wow. The Hydro Dragon is more powerful than Paimon thought. Anyways, the last time we came here, the Traveler only heard voices from the Fountain of Lucine. No emotions boiling over or anything. It is as you said. This might be because I am different. It is not only the fountain. I can sense emotions from all waters in Fontaine. Rivers, lakes, and even the rain. Mm-hmm. That sounds awesome! But I rarely ever do anything like this. Emotions carried by water are always chaotic and disconnected. As an outsider, having my mind occupied with irrelevant memories isn't exactly a pleasant experience. Which ones? It's fine. I prefer not to speak of those memories. That does not mean I am deliberately hiding them. It was a coincidence, but perhaps it is a good thing that you saw everything in that form. You should now understand why I believe there to be a conspiracy behind all this. These two cases are much too similar. I felt like I needed to do something. Paimon's starting to lose track of what you're saying. Don't leave Paimon out of the conversation. Paimon wants to help too. Then let us get back to the point. While I was investigating the fountain, I discovered something strange. तुझे भी फुरीना की आवाज़ आई रोने की. I did not sense too much hatred towards me within its accumulated emotions. However, I did find some resentment directed towards Kiara. If I remember correctly, it seemed to be related to a तुम्हारा चैट smuggling मिस हो case. गया. ये पिछले वाला हाइड्रो आर्कोन को क्या हुआ था? अरे पिछले हाइड्रो आर्कोन मर नहीं गई थी उसके अंदर कैटेक्लिज्म के अंदर.
सुमेरु के अंदर जो पूल ऑफ अमृता है वो पिछले हाइड्रो आर्कॉन की बॉडी ही तो है, जहाँ पे बहुत सारे जो हाइड्रो क्रिएचर्स है वहाँ जाते हैं पिलग्रिमेज के लिए। वो वहाँ पे मरी थी, तो रुख देवता ने प्रीवियस हाइड्रो आर्कॉन की बॉडी को एक प्योर पूल के अंदर कन्वर्ट कर दिया था, और उस पूल में से निकली एनर्जी ने अबिसल एनर्जी को रोक दिया था। Someone welcome to the chat. He's so strong in the lore that they decide to not even make a domain fight for him in his story. I don't know what caused this to happen, but seems like there won't be a shortcut to finding the organization that may be pulling the strings here. Oh, didn't you read about that in one of the documents? Guys, like दबा देना किसी ने नहीं किया अब तक तो। You've read about it. In that case, the resentment should have come from that incident. Huh? What are you doing here? Navia! I was just about to look for you at the Palais Mermonia. Navia! Nice to see you again. Is there something we can help with? ट्रेलर में तो फाइट थी इसकी में भी, वो ट्रेलर में नहीं हुई, वो इसकी स्टोरी क्वेस्ट में नहीं। मुझे भी यही लगा था कि जो ट्रेलर में न्यूविलेट का दिखाया ना, वो सब न्यूविलेट की स्टोरी क्वेस्ट के में आएगा, लेकिन मोस्टली वो आर्कन क्वेस्ट के अंदर था। I've heard some things, but I'm not purposely asking around or anything. Don't worry. Rumors are abroad that someone's scheming against Melusines, and that you're investigating the case. So I told the Spina di Rosula to keep an eye out for leads. We've had unfamiliar faces showing themselves at the Fleuve Cendre lately. Maybe you'll find the suspects among them. Thank you. Where did you hear about all this? Navia, the cute girl. The Chief Justice out on investigation, accompanied by the Traveler from afar. No matter how you conceal your whereabouts, there will be countless eyes watching you. You talked to Kiara, but didn't ask her to keep things secret. People curious to know asked around for information, then it was only a matter of time before word of the threatening letter spread all across Fontaine. So that's what Charlotte meant. Indeed. I did not expect that this could be kept hidden for too long, but the rumors still spread faster than I imagined. You know, it could be because you attract more attention than you think. True. Anyway, any progress with the investigation? The suspects who threatened Kiara might have to do with a certain smuggling case, but it is still uncertain if there is in fact another party behind all this. We are planning to return to the Palais Mermonia to revisit some details and identify the senders of that threatening letter. All right, then I'll round up the Spina di Rosula and follow up on their progress. Wait for my word. Ta-ta! Ta-ta! Neuvilette, do you think there'll be any problems now that the word is out? I have already considered that possibility, and I do not think that there will be any. As a matter of fact, once the word gets out, no one would dare to harm Kiara in broad daylight. अब तक हुआ नहीं, मैंने कहा था 45 मिनट की नहीं है। What is more important is how the case is perceived by the public. 400 years ago, they chose to side with the old regime and direct their resentment towards the Melusines. I hope the same won't happen again. Let us head back to the Palais. Palais. Let's go back to the Palais. Strange. What are these people doing out on the streets so late at night? Did something happen? Let's take a look around. Have you heard? Someone's plotting against a Melusine. This is 100% the truth. Even the Chief Justice is investigating in person. What? That's it. Who's been threatening Melusines? Show yourself. ये हुई ना बात, ऐसे खड़े होते हैं। Our enemies are lurking in the shadows and won't easily reveal themselves. But no amount of hiding will Steam keep Bird us का from रिपोर्टर finding है, them. हर्बियर। That's exactly what I wanted to say. The guards have already begun to take action. We can't just stand by and watch. बेचारी मेलुजिन पीछे खड़ी हुई है आराम से। Think about how much we owe them. Now that they're in danger, Good how can guy. we just sit back and do nothing? Good guy, Cornel. Good guy. Everyone, please stay alert to your surroundings from now on. If you see any suspicious persons, report them to the guards immediately. इन दोनों की शक्ल सेम नहीं है, ये बंदे की और ये बंदे की, बस हेयर स्टाइल डिफरेंट है। उसने चश्मा पहना हुआ, इसने चश्मा नहीं पहना हुआ। इन दोनों की शक्ल सेम है। मेरी फोटो के पीछे तुमको इसकी शक्ल नजर नहीं आ रही होगी, so I guess there is no point. It feels like you've been following me this whole time. Did something happen? We were informed that. Nope. We just finished our shifts and happened to be strolling by. Oh, ये इसकी इनका ख्याल रख रही है मेलुजिन का। Have you had dinner yet?
Why don't we check out the new items at the dessert shop together? This isn't a good time to be out and about. Come on, don't act tough. I bet you're hungry too. All right, let's go buy a cake or something. You shouldn't ever skip meals, especially if you have another shift scheduled for later. वलीदा लोग मेलुजिन्स के साथ घूम रहे हैं भाई क्या बात है Neuvilette's keeping an eye on the situation. This is the perfect chance to get promoted. We gotta make sure we give it all we've got. आपदा में अवसर ढूंढने वाले Genshin story won't end after the last nation. I have a strong feeling. अगर नहीं क्या देखो हर किसी की हर चीज़ की एक लाइफ होती है मुझे लगा अगर ये लोग अगर ज़बरदस्ती खींचते रहे ना तो इट कुड बी डेट्रीमेंटल है ना पर्सनली आई वुड लाइक टू प्ले Genshin Impact by the time I'm 60 60 साल की उम्र तक मैं खेल सकता हूँ उसकी स्टोरी मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर कुछ अच्छा हो खेलने के लिए Were you planning to shirk your duties if Neuvilette wasn't involved? Relax, I was just playing. We've worked together for years now. If something happened to them, I'd be haunted by regret for the rest of my life. Good guy. That's more like it. We should stand guard until the criminal has been caught. Come and fight me instead, you cowards! Have you heard? Even the special patrol came to help. Shh! Look! Isn't that Neuvilette? I think he's looking at us. Looks like there's nothing to worry about. मैं 60 साल तक अबिस नहीं कर सकता टेंशन ना लो ना अबिस कराने के लिए कोई और मिल जाएगा Chinese people are used to writing long web novels but their writing quality is mid. Genshin feels like another one of those but with polished writing, too many side quests. Hope the payoff is worth it. या भाई मतलब अगर 6 साल के बाद इन्होंने घटिया पे ऑफ किया ना तो Game of Thrones वाली हालत हो जाएगी इनकी. This is truly wonderful. So, wanna go over and say hi? No, I should stay where I am. My appearance could give rise to unnecessary commotion. Let us stick to our plan and return to the Palais Mermonia. The faster we uncover the truth, the better. Okay, let's go. Palais Mermonia. अरे कहाँ गए अच्छा मेरे साथ ही तो है क्या करूँ यहाँ पे मैं लुक फॉर सस्पिशियस डॉक्यूमेंट ब्राइबरी केस ये था ब्राइबरी केस स्मगलिंग केस यस यस स्मगलिंग The smuggling case was solved by the joint forces of the guards and the Maréchaussée Phantom. This is the one. The list of involved suspects should be... found it. What does it say? The principal offenders Domenico, Inika, Yuna, and others have been caught. They have been sent to the fortress of Meropide following trial. Those with close connections or mutual interests with the offenders but who did not participate in the case will not stand trial. Among them, surveillance of Essan has ceased on account of his good behavior. All other personnel remain on our watch list. So many names. Is the one who sent that threatening letter to Kiara on the list? Yes, there is something suspicious about Essan, to be precise. It seems like he's closely related to the core members of the smuggling case, and he moves around without much restriction. Monsieur Neuvilette, someone claiming to be from the Spina Durasula just checked in with us. He said, and I quote, "We have located the suspect. They're chatting at the cafe." वही होगा ऐसे हम होगा How did Navia find them so quickly? We've only just figured out the suspect's name. I too am perplexed. The cafe isn't too far from here. We should head over and take a look. Okay, let's go. यहीं से जाना पड़ेगा ये सब है क्या इनको पकड़ के बैठे हैं सारे लोग
ये क्या है? Whoa. Check out all these people. Hey there, are you Navia's friends too? These are the people who have had recent dealings at the Marechaussee Phantom. They're usually hidden in the Fleuve Cendre, but I sent for someone to invite them over. Invite them over? Exactly. Now, I heard there's great coffee here, and so I asked them if they'd like to come and have some. Yeah, it's our pleasure to be guests of the Spina di Rosula. Udinot. Udinot. Messina. I've wanted to have a meetup like this for ages. इन सबकी शक्लें क्यों बुझी-बुझी सी लग रही हैं थोड़ी? Something feels off. Exactly. But, oh well. Let's get back to business. Is there anyone called Essan here? Yes, that's me. लग रहा है उठवा लिया इनको, वही तो भागा। You're Essa? Yes, monsieur. अच्छा, इनकी तरफ भागा। You know सौरभ HD TV? नहीं भाई, I don't know सौरभ HD TV. कौन है ये मनुष्य? Did you write that threatening letter to Kiara? He did. I did, but I was just following orders. Orders from whom? बेटा अभी न्यूविलेट ना जैसे चाइल्ड की पीठ में कोहनी मार के घुटना मार के उसको लिटाया था ना, तुझे भी लिटाने वाला है ये। Domenico, he was my boss. I couldn't disobey his orders. HD TV बकने वाला भाई, अपने को नहीं पता कौन है सौरभ HD TV। Domenico, where is he now? The fortress of Meropide. Well, I'm afraid even the Spina would have trouble looking into that place. Looks like you'll have to make the trip yourselves. This was as much as I could do. You've done more than enough. I am extremely grateful for your help. Leave the formalities for later. You should find Domenico first. Indian Genshin streamer, someone sub-botted him. I believe 9.88k and not even 500 or 600 views on videos. Okay. Saurabh HD TV. Let's see. अच्छा, अभी भी तो लाइव है बंदा। ये चीज़ें मुझे कई बार समझ नहीं आती। 9.88k व्यूज और उसकी करंट स्ट्रीम के ऊपर 2 की वॉचिंग है। 270, 65, 188, 105, 18, 218, 141 ये वीडियोस हैं। एंड लाइव 152, 130, 151, 102, 131। वैसे तो ठीक है, मेरी भी इतनी ही आती है, बट यार मेरे सब्सक्राइबर भी तो 450 हैं। 10,000 सब्सक्राइबर के ऊपर होता है यार, मैं क्या कह सकता हूँ। What can I say? इसीलिए ना जब भी मैं कभी किसी को बोलता हूँ ना कि जब मैं किसी को बोलता हूँ कि भाई सब्सक्राइब करवाओ, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि उन्हीं लोगों से करवाना जो देखते हो। मुझे फालतू के सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए यार। इवन तुम देखो ना 450 सब्सक्राइबर्स है, मेरी भी 6 की वॉचिंग आ रही है, विच इज़ टेक्निकली नॉट गुड। 450 में से अगर 2% भी लोग आए मेरे पास, तो तभी मेरे पास टेक्निकली 15-20 की वॉचिंग होनी चाहिए, है ना। लेकिन भाई मतलब 10,000 सब्सक्राइबर्स और एक व्यूअर तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। If he really is the one setting up the conspiracy, it'd be best if he's exposed as soon as possible. All right then, let's head to the fortress right now. ओके, कंटिन्यू करंट क्वेस्ट। किधर जाने का है? नीचे। अच्छा, फोर्ट्रेस में मेरोपीड जाना है। टेलीपोर्ट टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। सर मैंने कब स्टार्ट किया तुमको देखना? तुमने कब स्टार्ट किया मुझे देखना? काफ़ी टाइम हो गया यार, अब इतना याद नहीं होता। काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 4-5 महीने तो हो गए, ऊपर ही हो गए होंगे। मैं ये बता सकता हूँ कि तुमने कब ज्वाइन किया डिस्कॉर्ड मेरा, तो उसी टाइम के अराउंड मैं क्या मान सकता हूँ। पर मुझे ना देखना पड़ेगा, उसका भी कुछ आता तो है मेंबर्स करके ना, आता है किसने कब ज्वाइन किया। यहाँ नहीं आ रहा, डिस्कॉर्ड के उस पे आता है। एक मिनट भी देखता हूँ। अब तुमने इतना याद दिलाई दिया, सो लेट्स सी। अगर मैं अपने इसमें मेंबर्स पे सर्वर इन सेटिंग इनसाइड शो चैनल
Looks like the situation has changed again. सेटिंग में जाना पड़ेगा मेरे को, सर्वर सेटिंग्स, इसमें होंगे मेंबर्स। कहाँ है ये मेंबर्स। यहाँ पर भी वो नहीं दिख रहा मुझे कि किसने कब मुझे ज्वाइन किया। बीच में एक बार आया तो था यार, मतलब कि यहाँ पे दिखता था कि किसने किस टाइम पे मुझे ज्वाइन किया। अगर मैं तुम्हारी ये देखूं, 21 अप्रैल 2023 को तुम मेंबर बने थे मेरे चैनल के। 21 अप्रैल 2023, 21 अप्रैल 2023। ठीक है, तो तुम मुझे अप्रैल से देख रहे हो। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अभी अक्टूबर आ गया, 21 अक्टूबर को तुम्हें 6 महीने पूरे हो जाएंगे। जब तक गेंशिन की एनिमे नहीं आएगी तब तक इंडिया में गेंशिन का कोई फ्यूचर नहीं है। इंडिया में गेंशिन का फ्यूचर बहुत ब्लीक है। आई नो। अरे मिस्टर रिजली स्कॉट। Welcome to the Fortress of Meripede, dear esteemed guests. We're back! Oh, and a greeting from none other than the Duke himself. Guess we made a name for ourselves at this place. जरा देख लो सर, पिंग मेरा बहुत हाई आता है यार। This isn't anything मेरा बहुत हाई new. आता है। I figured you had important matters to discuss when the two of you, not to mention the Chief Justice, showed up. Let's assume we've gone through the pleasantries and cut right to the chase. I do remember a thing or two about Domenico. He once attempted to round up the other inmates and instigate a protest. अरे डिस्कॉर्ड पिंग, नॉट दिस। अच्छा, मेंशन। अच्छा, डिस्कॉर्ड पिंग। अच्छा सॉरी, डिस्कॉर्ड पे क्या पिंग किया हुआ है? अच्छा ओके, 165 days and 3 hours। तुमने कैसे पता लगाया भाई? आए तुमने कैसे पता लगाया? हमका भी बताइए। Who does this guy think he is? Hyman hopes nothing came of it. ब्लू कॉर्ड ऐप पर दिखता है। ब्लू कॉर्ड ऐप कौन सी He है? once attempted to, I said, meaning that it was over before it even started. And now he's threatening Melazines, is he? To be honest, Domenico doesn't seem like much of a conspirator. The fact that the three of you bothered to personally investigate raises a flag. Is there something else going on behind the scenes here? आपने अकाउंट कब ओपन किया भी दिखाता है। डिस्कॉर्ड का मॉड एपी के टाइप है। अच्छा, तो तुमने कैसे देखा? He's got the same concerns we do. I am concerned about this incident because something similar has occurred in the past. I wish to meet Domenico in person and have my questions answered. That's an easy one. Let me think. I think he's at... Oh, did I hear someone say Melazine? What happened? Oh, Sijween। सस्वीन आ गई। Yeah, and we're investigating. The person who threatened her seems to be imprisoned here. डिस्कॉर्ड का मॉड एपी का टाइप है, वो तो मैं समझ गया, लेकिन बट तुम्हारे पास वो कैसे है? मेरे सर्वर में होना चाहिए ना वो एपी के। Really? Is Kiara gonna be okay? इसको कैसे पता कि कियारा है वो? एक मिनट, हमने कियारा का नाम लिया क्या? सीजून को कैसे पता कि कियारा है? लेट मी सी। अगर अपनी स्ट्रीम पीछे करके देखो एक बार। सीजवीन इन्वेस्टिगेट द पर्सन हु थ्रेटन्ड हर सीम्स टू बी हेल्ड इम्प्रिजन्ड हियर। भाई इसको कैसे पता कि कियारा को लेटर गया है? हमने तो कियारा का नाम भी नहीं लिया। ये बंदी भाई स्टार्टिंग से सस है, इसकी ऐसी की तैसी। ये स्टार्टिंग से सस है। आर्कन क्वेस्ट के अंदर ही बहुत सस्ती है, और मैंने देखा एकदम से पकड़ लिया। हम आए कि किसी ने मेलुजीन को थ्रेट किया। ये बोला कि मेलुजीन हैव बीन थ्रेटेंड। इसने बोला रियली इज कियारा गोना बी ओके? देख लेना एक बार, बाद में एसएस भेजा है। सस्वीन साइकोसीन वीन। There's no need to worry. Clarand is protecting her as we speak. कोई से पूछ ही नहीं रहा कि इसको कैसे पता कि कियारा की बात है। Well, that's great. But if the criminal's still... Is there anything you can do about this? Ah, head nurse. Do you require me to personally deal with the criminal? Writhsley. Okay, I get it. I'll bring Domenico to you. That's your only demand, correct?
उसके पास एक पावर है, उसका नाम है ढोर की बिल्ली. Think of it as more of a humble request. I'm here on my own accord, not to formally transfer a criminal for trial. I urge you to set aside any concerns. Because there is only one Melusine in court of Fontaine, that's why. नहीं, कोर्ट ऑफ फॉन्टेन के अंदर जो क्या कहते हैं अपना पहले मरमोनिया है जिसका ऑफिस है, वहाँ पे जो मेलुजीन है उसका नाम कुछ और है. कियारा तो एक नॉर्मल गार्ड है. बाय आई एम गोइंग साइकिलिंग. ओके ब्रो. यार तुम साइकिलिंग करते हो, इसका रिकॉर्ड डाला करो हमारे फिटनेस वाले चैनल के अंदर. क्या बात है, डाला करो. Thanks for the बनाया trouble. इसलिए लोग इंस्पायर Consider होंगे. me in your debt. Whoa! If Paimon were you, Your Grace, Paimon would take this chance to ask for something really important. Well, were I still a criminal, I'd probably ask for a lighter sentence. But I'm sure Monsieur Neuvilette would reject that. Now I hate carrying watch or phone. चलो. But enough jokes. I'll look for Domenico and bring him to you. Make yourselves at home. Our dear head nurse has mentioned you quite a few times, so I'm sure she has a lot to say. Please come with me to the infirmary. Please come with me to the And watch your infirmary. step. There's some pretty dark areas, so make sure you don't trip over anything. ओके गाइज, तो ऐसा है, मुझे लग रहा है कि अभी ये क्वेस्ट कम से कम नहीं तो 45 मिनट 45 मिनट्स और चलेगी. एंड आई डोंट हैव 45 मिनट्स राइट नाउ, क्योंकि मैं आज स्ट्रीम मैंने ऑलरेडी बहुत लेट स्टार्ट की है. तो इस क्वेस्ट को मैं यहीं रोकता हूँ. यहाँ से इसको बाद में कंटिन्यू करूँगा. ठीक है, भले ही 45 मिनट चले या 15 मिनट चले, मैं किसी के बहकावे में नहीं आने वाला अब. ठीक है, यहाँ से स्ट्रीम हो गई है. इसी पॉइंट से स्ट्रीम दोबारा कंटिन्यू करेंगे और न्यूविलेट की स्टोरी क्वेस्ट फिनिश करेंगे. ठीक है जी. अब मैं आप लोगों से मतलब डिस्कॉर्ड में, किसी ने स्ट्रीम लाइक नहीं की हो तो लाइक कर दो. डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैट में पिन किया हुआ है. दोनों जगह से डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो. और मैं तुम लोगों से मिलूंगा अब डिस्कॉर्ड पे. ठीक है जी. अब करते हैं समापन. अब हो गया हमारा चाय का टाइम. अब हम चाय सुई पियेंगे साहब. सब्जी हम साय सुई पियेंगे, साय सुई. ठीक है जी. चलो गाइज, टेक केयर. ठीक है, डिस्कॉर्ड में मिलते हैं. चलो फिर कल मिलते हैं सब. बाय. डिस्कॉर्ड पे आ जाओ, कल क्यों मिलेंगे. तुमसे तो मैं डिस्कॉर्ड पे मिलूंगा अभी. ठीक है, चलो जी, टेक केयर, बाय, सी यू. It's out of my hands, but I'm still in control. It's out of my hands. You can never take away the power of my It's out of my hands, but I'm still in control. It's out of my hands. You can never take away the power of my It's